So yes. So is it visible? Bring it to the presentation mode. I hope that this is visible to everyone. Okay, fine. Shit. Okay. So basically, it will be an interactive. What I will hope that it will be an interactive learning in the with the perspective of artificial intelligence and future engineering, future of learning. Now, is there anyone? What about the students? Are they aware of this AI? Have they learned this particular course of artificial intelligence? Any third year or any third year or final year student can just come in. I request the owner, means I request the administrator to just give them the privileges so that they can even ask and they can participate. So students, can anyone tell me that where actually you do have encountered this AI? Have you seen it in your day-to-day life? Students? Okay, so I just hope there is some technicalities. Yes, sir. Oh, fine. That's wonderful. So where actually you have found, where you have witnessed this AI in your day-to-day life? What do you get from this term AI, artificial intelligence, and how it has changed the whole dynamics in the world that we live in? So theoretically, if we can go about, then artificial intelligence has been proliferated in our day-to-day life. From whatever we do, from online shopping to anything, to smart ticketing system, to the Alexa, to the GPTs, to the everything, it has changed our lives in the past 2 years, 3 years, 4 years down the line. You can see that it has changed our life. So why it has happened and what it is actually doing? Can anyone? Okay, so कितने स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने दिनों से होगी? Any of the participant can just give me the answer. How long this AI has been? From when this journey of artificial intelligence has started? 5 years? It is 5 year old, 10 year old, 15 year old. How many? How much? कितने year students? Let me show you one slide, है ना? Although we were supposed to be discussing it later on, but just out of the curiosity, I'm just sharing you this slide first. So this artificial intelligence has started. Let me. The presentation can be shared. Is this slide visible to you, everyone?
Yes, sir. नहीं, हाँ, this slide is visible. Okay, fine. ये बड़ा हो नहीं रहा था. Now just look at the time when first advent of this AI application has been done. Just look at the timeline. It is in 1943. ठीक है? So AI is not new. It was not the scenario that AI is completely new. It is a thing of 10 year, past 10 year, 20 year, 30 year. The first time AI and its related technique and technology has been developed way back in 1943. Okay. Thereafter, Alan Turing test. Are you aware of the name Alan Turing, the scientist? For all the computer sciences students, this is the maximum award or this is the highest award that you can get in the computer science. There is no Nobel in this field. So this is the highest award of computer science and engineering, or for any IT engineering, or for any machine learning, deep learning, whatever the students of the different various specializations are there. This is the highest award that you can get. That is named after Alan Turing. So Turing, and how many of you watch Hollywood movies? Many of the students, I suppose. So there is a movie named Imitation Game, most probably available on Amazon Prime. So you can just check out this particular movie. It is based on the Second World War and the philosophies of the concept that Alan Turing has introduced. So in the 1940s, this intelligence has evolved. Firstly, it has evolved with the robot, then there are the robotic principles, then ciphertext, generating the ciphertext, the decoding the ciphertext used to be there. Thereafter, it evolved slightly, and we had the chess playing program, that is the Cloud Shannon. How many of the electronics background? You must be aware of this particular name, that is the Shannon's theory of utilization of the bandwidth is there. So chess play program, and the person who did it was the Claude Shannon, for which we also study the different theories of the Shannon's algorithm and Shannon's theory. Thereafter, the checkers play program. Thereafter, the summer project in AI McCarthy. Now, the word has also been coined in 1956. Thereafter, dedicated lab was established in 1959, MIT AI lab. Okay. Thereafter, MIT also introduced the NLP based. Now, NLP, that is a natural language processing, is again not a new concept, but it is a very old concept that has been initiated way back in 1965, ELIZA. Thereafter, the list program used to be there, expert system, and the expert system that we discussed was way back founded somewhere around 1980. Thereafter, it has moved towards a neural network, means after Lofty-Zadeh, it is not mentioned over here, but Lofty-Zadeh, that is a famous Egyptian scientist, has introduced the term of the soft computing, the neural network, the artificial neural network. So this neural network used to be there in the in 1980s. Thereafter, it has moved to the IBM Deep Blue Sea. So those the faculties, those who are over here, I can assume that you must have witnessed this in 1997. What happened? That was the world champion. Who is the current champion of chess, students, right now? I hope you people are knowing, but due to some technical issues, you might not be responding. So, what happened? IBM has developed a program that is a supercomputer named Deep Blue, and it is again using AI. So, what happened? It has defeated the current existing world champion of chess, that is Gary Kasparov. Thereafter, again, the MIT AI lab has even used it for the emotional intelligence. Thereafter, a lot of things has happened. Thereafter, the Google came, Google search engine, iPhone, 12, Jeopardy, machine learning things, quiz champion. So everything was happening. But in the recent 5, 6, 8 year, what has happened? Previously, it was used to be done on the high end system with a lot of processor, with a lot of RAM and personal computers or the personal mobile devices, but not having the resources so that they can be running this hardware related or more hardware centric softwares, which actually AI requires. But what happened due to the VLSI, due to the very large scale integration and the new chip manufacturing that has happened with
with the communication with the communication with the faster communication that is available, with the faster internet that is available to everyone. Now it has brought both the things. Means you have got the computation power, you also have the communication power. Now AI can run. So this has actually started way back in 14, 15, 16. Thereafter, the moment you are going to be running the YouTube, it is also going to giving you the example that what content you should witness next, what content that you have seen it has profiled you. Now it is going to be giving you an answer, or it is going to be suggesting you the content that you have witnessed. Okay, in the same way Alexa was developed, in the same way Google Assistant was developed, because you communicated a lot. Now tell me, what is the most recent, and thereafter in 21, 22, the GPT, the generative AI has come into existence. What is the current means? This is a graph till 2023. But if I'll ask you, add some new things in it. So in 24, what you will be adding, and in 2025, what you will be adding. Just tell me, Hannah. Before proceeding, just tell me what you will be adding in 2024 and what you will be adding in 2025. Any student? In 2025, we'll be adding DeepSeek, isn't it? Yes or no? We have to add DeepSeek because it is again a new technological revolution. Now, theoretically, AI has evolved significantly over the decades. Starting, we have discussed it from the rule system to the deep learning, and in between, we have the machine learning. Now, this all these new things has transformed the industries. Any industry, let's us whatever be the marketing, whatever be the content creator, whatever be the streaming services, that has revolutionized the whole industry. Now, from where actually this whole thing has started? The whole thing is started somewhere around 1950s. I have shown you the slide. It started way back in 1950s with the Alan Turing. Thereafter, the Dartmouth Conference was there. Symbolic AI and rule-based system dominated this particular phase. Thereafter, in the 80s, we had this expert system. AI funding increased, but still people were not aware of it. But still, the academic discussion, academic research was happening. But still, it was on the papers. It was not a reality. Thereafter, in 2000, we have shifted towards the rule-based AI to the machine learning. Again, what can be the example that the Netflix recommendation system or Amazon, whatever be the recommendation system that you are getting, if you are, let's assume if you go down to booking any hospital or sorry, booking down to do any hotel, at any place if you want to visit, it is also going to be suggesting you nearby restaurants. So what are these ones? These recommendations are nothing but these are based on the profiles that do oftenly the people who go to that particular visit those restaurants. Previously it was done through data mining. Bड़ा simple sa example hai. Let's assume you go down to buy bread in the morning from any grocery store. Now you also buy eggs. Let's say एक नया grocery store has opened up. Now it starts keeping bread. So what are the additional thing he or she should start selling? Obviously, they should be having butter, they should be having eggs, so that the people who are going to be buying the bread, they can also buy butter, they can also buy cheese, they can also buy eggs. So this is nothing but this is data mining. This is the new recommendation, and the AI world we are calling it as a recommendation. So obviously, what AI is going to give you a recommendation that oftenly the people who buy bread can also buy that. So it is transforming the whole thing, the whole ecosystem of business. Now, from the 2010s to present, rise of the deep learning and the large scale LLM model that you must be aware that generative AI is using, breakthroughs in the image recognition, natural language processing, and autonomous system.
AlphaGo defeating the human Go champions, that has also happened. So this is the diagram that is not visible right now that I have also shared you. How many of you students have learned, tell me, how many of the students have learned the first order logic? How many of you are aware of first order logic? Is there anyone who know first order logic and how it goes, how it works? So in the back end, in all the natural language processing, whenever you give any input, it is going to be transformed. It is going to be transformed into its mathematical notation. The course content of the AI is designed in such a way that you have got a propositional logic. In the first half, you learn the different traversal techniques. That is the breadth first search and the depth first search. Then the hill climbing. Everything is covered over there. Thereafter, we have got the propositional logic. Why? How we are going to be converting this text into the mathematical notations. Thereafter, we have got the first order logic. Let's assume if I say you how the computer is going to be understanding. If I say you, if it will rain, then I'll take the umbrella, or I'll take an umbrella if it is cloudy. You must have gone through all these things, all these concepts, isn't it? Students, let's say I give you a first order logic sort of example that Raju likes Rani. Can you create the first order logic? Can you give me the equivalent string for this? So again, we will be using the word that is likes of Raju comma Rani. So Raju likes Rani. Okay. So this way this proceeds. So this is the first order logic. Now coming down to the applications of the artificial intelligence. Now you can see artificial intelligence in healthcare, artificial intelligence in finance, everything. So finance and healthcare is very important. In the healthcare, also the smart watches has revolutionized the whole content. What you are seeing, it is also going to be telling you that your BP is more. You should be meeting your doctor. Your sugar level has spiked up. You should be checking out with your medical practitioner, the registered medical practitioner. You should be, it is also going to be recommending in some time, and afterwards it is also going to be recommending you some medicines based on your whatever the measurement or whatever the entries that it is going to be taking. So again, AI is very helpful in healthcare. You must have gone through, you must be recalling one instance when a person using an Apple Watch has been diagnosed, or it is actually the Apple Watch has known its parameters that the person is going to suffer from the cardiac arrest. And what has happened? Mm, it has called the doctor on SOS, and thereafter the doctor checked him, and thereafter he has operated upon him. So it has also saved the life of. It also saves. It can be very helpful in saving and notifying people. You can also recall one. I can give you one more example in the AI in healthcare. There was one lady from Europe. It was happened in the last year, 2024, July, I suppose June or July. This lady, what happened? His son was suffering from very chronic disease, and the doctors were unable to find out the reason. Were unable to diagnose the actual kid. Now, what she did, she has noted down all the symptoms and she has put down in the GPT. And GPT has suggested, the chat GPT has suggested that the person or or that particular kid was suffering from that particular disease. Now, knowing this, the lady went again to the doctor, and doctor has figured out what is the exact reason. So that is the recommendation which generative AI or AI can give you, and how it can be helpful in the healthcare. So it has revolutionized the whole vertical of the healthcare. Now, not only healthcare, it has also revolutionized the whole new world of the finance. Now there are different model who are going to be suggesting you in which stock you should be investing, in which mutual fund you will be investing, which tool you are going to be using, which tool you are going to be taking, which instrument you should be investing upon.
So AI is in finance is again, it has revolutionized the whole world. Now JP Morgan's AI trading system is a prime example of such thing. Now moving on, AI in autonomous system is again very much relevant. What it did, now the whole concept of the self-driving cars you must be aware of for the smart transportation. Now you can see how much our cities are suffering from the traffic, and what is the prime reason of the traffic, that the people are not disciplined enough. So if we will moving towards a self-driving car, then obviously the discipline sort of issue is not going to be there. So it can be very much helpful. Apart from that, the robotics and the industrial automation can also be, it can be used, it can be helpful. So Tesla's autopilot can be a prime example of the autonomous system, AI in autonomous system. Now again, AI in security. Security is a very prominent or the enticing concept with the students. You can also use AI in cyber security or security. How it can be helpful, students? Anyone can just tell me how it can be helpful. Any of the student? We can detect, we can also predict in the COVID, during the COVID time what has happened. Everyone must have witnessed that it was predicting that the wave is going to come up, the wave is going to go down, how long it is going to continue. So you can make honest, and we you can also predict when it will, when it will be there, how long it is going to sustain, with what veracity it is going to be sustaining. So we can predict that that particular packet is going to be anomalous, that particular threat is going to be there. So it can be done with the different AI models or with the different LLM models. Again, in the entertainment, so again, it is a very relevant concept, that AI and entertainment, AI generated content. Now, this is on just right now what I am telling you, that it can be divided into two different phases. One can be the recommendation system. Second one can be, now you can also generate your own movies through the AI. So AI generated content, it has got a huge market right now with the, not with the GPT, but with the co-pilot. You can also create your 1 second or 2 second of video. Have you anyone attending this particular seminar has ever tried to create it? There used to be a competition that is also happening for the AI generated content in the movies, music, and games. You must be aware. You can write down the story. You can write down the. You can create the video also. You can put down the picture. You can put down the your favorite actor actresses faces also in the video, and thereafter it is going to be creating video based on those actor and actresses till the time the copyright violation is not there. AI driven recommendation is there. It is always be there. Netflix, Amazon Prime, Spotify, that whatever we can see, that is the AI content. AI and entertainment can be, are the example of these things. Thereafter, what we can see, or where AI can be very much helpful in the smart cities. The traffic management can be done by the artificial intelligence. It can be very helpful in decongesting the traffic from the city. AI powered surveillance system and the security monitoring can be there. It can be very easily going to be giving permission or the a legitimate user and entry to your own premises, to your compound, to your campus, and again it is going to be filtering out anyone, है ना? That is not at all going to be relevant. Now coming down to the AI in education. So that's the topic. But before covering to that, I had to cover everything of the AI. AI in education, how it can be helpful to students. Right now, how many of you actually try to issue books? Can anyone in the class tell me, or can anyone in the whole seminar tell me any of the books for artificial intelligence? Tell me one book.
of the artificial intelligence? Rich and Knight. Is it a student? No. Obviously, I am asking this question from the students. I am faculty, sir. Oh, I can understand that, Anna. I can understand. I asked this particular question from the student because I'm pretty much sure that none of the student must have gone through Rich and Knight, or they must be knowing even the name of this author. Anyways, so that's the example. But how we can revolutionize it for the faculties? Again, what we can do, obviously, we cannot move aside from this GPT and this large LLM models. We have to use it. What we can do with the students now, if we have, let's assume we have to create a content, or we have to conduct a quiz. So what we can do? We can very easily ask every student to give us 10 questions or 5 questions each of the same topic for which the quiz is going to be conducted. We need to compile it, and we all know that from where students are going to be giving us those questions. Now we need to compile it, and what we need to suggest the GPT that don't consider these questions and give us the new questions. After considering these questions, give us new question. So this can be the way forward, because the students are using this LLM model much more in a much more better way as compared to the teachers. So we also need to evolve ourselves. Yes, for the student, they can go down to any Coursera or anywhere, and you can find different courses available. Apart from only learning down this YouTube courses that get down this particular course for this much, don't do those courses, but get down to the real application based courses. So that's where AI is going to be very much helpful. Again, to read out any material, you can use GPT extensively. Just type that, it is going to be collecting the information from everywhere. It is going to give you the things. If you are unable to solve any numerical, you can put down it, and a GPT is going to give you the answer. But yes, you need to verify. But again, I'll request every of the student to just go through Rich and Knight book or any dedicated artificial intelligence book to get down to the basic theoretical background of the artificial intelligence. Thereafter, AI is again very much helpful. One sector can be the education, other sectors that we have discussed, it can be very much helpful in the agriculture. A lot of research is happening. Yes. Is there anyone saying anything? Okay, I'm assuming no one is saying anything. So thereafter, we have got the AI in agriculture, and again, it can be a new vertical. It is a new vertical, a lot of research, and in fact, I have missed out on this particular point. Every vertical and a lot of new research is happening. So the students, I'll request again, I'll urge all the students just participate in the research, just not to not only just to know the things, but also participate in the academic research, how the things are happening, how the models are working. Right now, you have got the computational power available with your devices. You have got the communication capability, means the fast internet is there. You have got the different models, machine already predefined models are there, CNN, ResNet, MobileNet, everything is there. You have got the extensive data sets available, that is open source on the Kaggle and UCI. The data sets, extensive data sets are available. Either it can be the numerical data set, either or it can be the images data set. Whatever the data set that you can require, you can get it. Now, it can be used in agriculture just for the smart monitoring of the crops, to suggest the new crop, to suggest when it is going to be watered, when the crop is going to be harvested. Everything can be done. You can even identify the diseases. You can even identify the when which sort of manure or which sort of fertilizer you are going to be giving to the plants to maximize your harvest.
So these can be done. One example is AI powered pest detection system. It can be done. Use it means move from the conventional projects to this AI based or the machine learning or the deep learning concepts, because this is going to be the future. Because whatever the content right now, GPT can also generate you the code. So you have to be smarter so that you can fit it into the existing system. Gone are the days where the you need to be generating or you need to be writing down the codes, but the codes are is going to be generated by the GPT. You have to be smart enough so that you can customize the code, you can use the code in your own way. So don't be afraid of AI, because it is opening new verticals. It is going to be everywhere. It is not only related to computer science, it has moved to the electronics, it has moved to the electrical engineering, it has moved towards the factories, manufacturing systems such as the mechanical engineering, chemical engineering, everywhere, to the biosciences, even to the arts, to the literature. It has proliferated. So it is everywhere. So you just have to use it. The data science, the artificial intelligence, everything is there. How many of you have witnessed the revolution of NVIDIA? Can anyone tell me? How many of you are aware of NVIDIA and what it did in the past 2 years? Just to tell you a fact that the moment DeepSeek came into existence in the last 15 days, what happened? The day on which DeepSeek was announced, NVIDIA has lost how many market share? How much market share? Can you imagine? Nearly $600 billion. So the day or on that particular day, NVIDIA used to be the highest highest market cap company, somewhere around $3.4 trillion was the market cap. The day it ended, it was fourth on the list after Amazon, after Google, and after Apple. So the market share was somewhere around $2.6 billion. So that was the scale on which Nvidia is operating. And what Nvidia did in last 2 years, it has developed the capability of making chips somewhere around 2 mm of the capability. 2 nm, sorry, I told you mm, but it was 2 nanometers. And this was the technology which has actually made it possible to develop the processors which are going to be used in the GPUs, which is going to be used in the AI and the LLM models to process more data, and more data to give you the exact outcome. So this way, NVIDIA has developed into the large conglomerate, and right now it has got the highest market cap. It used to be there, but still it is more than $2 trillion. So just you can imagine the total economy of India. The budget was presented some days back, and what was the GDP? India's GDP somewhere around $3 trillion, and a company or a private company called Nvidia has got a market share of $3 trillion almost, or even more than that. So you can imagine the scale on which Nvidia is operating upon. And what has helped Nvidia to move on? The AI. So AI is not going to be taking any job to any of the student or any of the faculties, no one, but it is going to be even helping you in expanding your boundaries. Now, AI in retail can be very much helpful. We have seen Amazon's AI-driven recommendation engine. We have seen Flipkart, and we have seen that it is going to be recommending you new products, better products that you are going to be liking. So these are all going to be helpful in nature. But the ethical concerns with the AI is also do remain. What are the ethical concerns for AI? Just tell me, can anyone? Ethical concerns can be in the decision making. Ethical concern can be, let's say कि आपने पूरा का पूरा दे दिया GPT को that create something for me. So that is one sort of ethical concern is there. A second one, writing any paper or any new research, you are going to be using it extensively. So you are not writing, but AI is writing, or this GPT or LLM model is writing.
So again, that is going to be non-ethical because it is going to be giving you one advantage over the person who is not going to be using it. So take that advantage, but use it in an ethical manner. In the same way that I have just gone through while preparing these slides, I have gone through one data that right now the patent industry or the people who are going to be filing for the new patents are going to be using this LLM models. So again, that is going to be giving one the person who is using it unethical advantage of leading the things. We should be taking care of all these things. The second one can be for any fine arts person who is going to be creating one painting. Now, this AI driven painting can also be there, AI based paintings can be there. Now, it will be very difficult for us to identify a painting from a authentic painter and generative AI generated or AI generated painting. So we need to figure out what can be the concerns, and the means government should also come in to limit it, how it can be done or how it can be limited, so that it should be used in a better way. Again, AI challenges, again it concerns our privacy, the data privacy and security. Again, it is very much, again AI is there, so we can have the different mechanism to breach the security. Now you don't have to write down the code, so you just, since GPT is going to be generating the code, so the data breaches can be maximum. And we know that the new data is the oil, or this data is the driving force behind everything. So what can happen? You have the data, you are going to be doing something, you can do n number of things. Now the largest scale data collection again is going to be concern of privacy. The moment you install an app, what are the permission an app is actually asking from you? Have you seen that? कि क्या क्या करता है ये आपसे, आपके कॉल रिकॉर्ड्स भी देखेगा, ये आपकी एड्रेस बुक भी देखेगा, ये आपके इवन एज कीबोर्ड के फंक्शनैलिटीज तक it is going to be asking you the permission, it is going to be asking to read your SMSs also. So it is asking for the permission of your GPS location also. So what are these ones? Again, it is collecting data. Everyone must be using WhatsApp. 2% has made it. Now WhatsApp was, right now it is also paid, है ना? Right now you can also subscribe to it, but beforehand when it was developed, it was not generating any revenues, and those two people has sold it to $20 billion. $20 billion. What I'm saying is, mark my words, that those two people have sold it to $18 billion. So what business model was there? They were not generating a single penny. They were not generating a single rupee, a single dollar. Only the subscriber used to be there. You were chatting, you were doing everything, you were sharing your photos, you were sharing your images, you were sharing your data, everything was there. But you were not, but it was not generating any revenues. Why? It was sold for $18 billion. Now, any of the participant can help me out with this. Why it has sold an $18 billion? Because of the concept. Because of the concept only. Or what? Because of the data that it is having. Okay? Because of the data. Facebook was not Facebook was the idea was good, but Facebook was not fool enough that it is going to be buying WhatsApp. What it did, it has combined Facebook with the WhatsApp, with the Instagram. Again, Instagram was not developed by Facebook. It has again buyed it. So it has created an ecosystem that you are going to remain over here, and it has got a lot of data. It can even create any sort of misinformation among people. So again, data privacy and security is very much important. Again, explainability and trust can be there. Black box problem in the deep learning, need of explainable AI models is going to be there. So these are the AI challenges. Regulation and policies, oftenly we find that the government are very lethargic in developing new rules that is compatible enough for the for governance in the AI. Even
Many of you will be surprised that we don't have got any data security law prevailing in India. If your data, if your identity is lost, then you cannot file any case with anyone. So we need to move forward with it, because data is again going to be very much important for you or everyone. The future of the AI lies in the quantum computing. With the quantum technique that is coming up, AI should remain sustainable. AI and human collaboration needs to be very much there, be it any of the fields, such as even recommending movies to the agriculture, to healthcare, to any of the vertical. We Is going to be the future of AI, and it is not going to be taking any jobs, but it is going to be creating more jobs and more jobs. New verticals are going to come up, the new job profiles and the job descriptions are going to be coming up as compared, and the previous jobs obviously won't be existing, but it is going to be improving the numbers of the jobs. Now, what we can conclude with this discussion, it has evolved from its basic premise of the rule based static to the deep learning and the generative AI sort of concepts. AI applications and its interrelationships continues to grow across industries to the different verticals. But we need to be careful but we need to be careful with it, so that we can use it ethically. Societal considerations must be addressed. AI is going to be shaping the future of humanities in the profound ways, or in the much needed ways. We can see AI wherever we are not seeing it right now. In the next 1 year, what we'll see that it has even used in the verticals that we are not knowing. So it will be there. So you just have to remain content with it. Now I'll appreciate some questions from the audience. Hello. Thank. Yes. Any questions from the student side? Thank you, sir, for the wonderful session today. On behalf of J.H. Raisoni, College of Engineering and Management, Jalgaon, I would like to thank you for giving your effort and time for delivering this session, sir. Thank you, madam. Thank you, all the participants. Thank you, sir. Okay. The next session will begin just after 10 minutes. So all the participants be on the line.
खडक सर नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. कशात? बस ठीक मजेत, बोला की. आज कमीत कमी ऑनलाईन तरी भेट झाली. हो, आता इकडे ऑफलाईन. सवळला येणं कमी झालं तुमचं. हा येतो मी तसं. अच्छा. आज ते 2-3 महिन्यांनी असतो. आता आले की कॉलेजला पण या. नक्की नक्की. एक 5 मिनिटं थांबू, सगळे जॉईन होऊन जाते. ओके सर. Good afternoon, everyone. Welcome to our national seminar on AI in Education, Future of Learning. Today, we are honored to delve into the transformative impact of artificial intelligence on the job market, a subject that touches every facet of our modern economy.
And it's my pleasure to introduce our estimated resource person, Dr. Charudatta Pathak, sir. Sir attended St. Aloysius High School in Bhusawal, which was founded in 1874, India's oldest convent school. Engineering from SSVPS College of Engineering Dhule in 1995 with outstanding academic performance. Subsequently, he commenced his professional journey as a CNC programmer in a tool room. He has used Deckel, Maho, and Micron controller to operate 2-axis and 3-axis machine in the production of pictures, dies, and molds. He began his career as a educator in 1996 when he became a lecturer at SSVPS College of Engineering Dhule. Furthermore, he completed his post-graduation in CAD/CAM from LD College of Engineering Ahmedabad in 2000 and obtained PhD degree from COEP in 2011 while also working in academia. Until 2023, he held multiple academic positions, including lecturer, assistant professor, professor, dean, principal, director, and vice chancellor at public and private universities across India. From 2008 to 2010, he held the position of project lead in the CAE department at European Multinational Corporation. Throughout his 28-year professional experience, he observed a requirement for reliable publication aimed at youngsters in grades 8 to 12, especially for early stage career planning. He initiated the establishment of NTech Digital Magazine, a complimentary periodical release on monthly basis and accessible via ntechonline.com. Teenagers with a keen interest in science, technology, engineering, and mathematics, and aspiring to pursue professional paths in this domain can consider reading NTech Digital Magazine. So, this is regarding Dr. Charudatta Pathak, sir. Sir, now you can continue, sir, with our session. So, thank you, Chetan, for this introduction and welcome to this session. I think this is the first session after lunch. So, I don't know, but I will try to make it like more interactive. And as the topic is there, so the impact of AI on the job market. So I will not rather no one can tell ki like which job roles will be there and in the future and which job roles will be like eliminated. Okay. So if we want to like understand what is the impact of AI, I may request you to visit the site, and here you can find AI's impact on science and technology jobs. So this is like the article which maybe later on you can go through it, and maybe I will put it in the chat box so you can copy this link. Okay. Coming back to the presentation which I have made. I think my screen is visible to you. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. So this was thanks. So this was started with a lot of discussion on our group of like scientists and directors forum, and I'm one of the active member. And we have again a very small group within that big group, and we maybe twice or thrice in a week we discuss it, and we discuss it with many national level, let us say key persons. So some of them are like directors at IIT or any other
like IIC, and based on our discussion, and even I interact with the persons from other developed countries, or we can say Western countries, and this is how let us say we can talk on this topic. And this started very early, miss. It's not that AI is like today, so it traces back to 1958 or so. And even if we say what is artificial intelligence, so that human intelligence was analyzed by Maharshi Patanjali very nicely in his shlokas. If you are interested, I will share that article with you, which is based on 5 principles, and many of them now they are like useful in different AI algorithm or machine learning algorithm. So both of them are like. So I will take you back in the history, maybe 5 years ago or 6 years back. So what we have experienced. Okay, so I think you can see this, the eyes of darkness. Okay, means how the people, some of the people rather. So Dean Koon's book, you can Google it. Okay, and so this is a fiction and myths and reality. Okay, so if someone says ki this is a fiction and cannot be reality, so this book uh, published way earlier in 1989. In this book, this COVID was predicted. Okay, and interestingly, the reference of that Soviet city was changed to Chinese city Wuhan, from where this COVID began. Okay, so it is something that is something to deal with. And then later on, Bill Gates. Everyone knows who is Bill Gates, and so he predicted 4 more things to come. That what we are not prepared for climate change, we are not prepared for bioterrorism. So these 2 things Bill Gates has predicted. It may happen in 2026 or might have started happening, but we don't know. Okay. So this is the rationale, and why this need for AI is ever increasing than earlier, because human race want to survive, and we don't know, but based on the simulations, so these are the things which can be predicted, what kind of mass we will need in future. So this is not a scary picture, but this is like a picture which everyone should be aware ki in future what what is there or what can happen, what bad can happen. Okay. So then coming back to the prediction, so I have taken you a little back in the history where these gentlemen's predicted something. Now Vinod Khosla, coming back to this, this is very so close to my heart. You can just search Vinod Khosla. He is a billionaire investor in US. He stays in US, and uh, I regard him in top 10. Okay, so he is again in top 5 also. So what he has predicted. So AI based system, it will be near free doctors, okay, lawyers and tutors. So this is something scary for us also. So as a teacher, okay, as you might have noticed, these kids, they are learning. Let us say they want to understand, say, complex numbers. So casually they go to Google or YouTube and they enter the complex number, and you can see the views. Okay, the views are in millions. Okay, and this is like then there will be like a tutor who will like interactively understand, and there are systems being developed to replace a professor. So what was the argument that these YouTube lectures, they are one way and they cannot understand, and there is one article also in my magazine, but the things are happening in this direction, like that ki,
there will be some sensors, and it will be a proctored lecture, and that machine learning algorithm will try to understand how much that students or a particular student, he or she has understood that particular concept. Okay, and there is like some magical thing. I don't know, but some of you might have heard about brainwave sensors. So it is like in a very advanced state. So many of us, I think, are not aware, but the sensors are used in gaming industry very aggressively, but these are now will be a part of future classroom wherein AI tutor will come and he will teach, and it will be all recorded, and student movements, students expression. So it will automatically come to know whether he has a doubt, then a different kind of explanation, and it will go on till the time he gets, like, there are many complex terms during our lectures which we cannot attend to every student, but it will not be there in AI. So a lecture, a student may grasp in 1 hour or maybe 30 minutes. Another student may take more than 60 minutes or maybe 120 minutes. Same lecture based on that AI model. Okay. Then plant proteins will replace animal protein. That is because we need to conserve the ecosystem. Then majority of the cars in most cities will vanish. Okay, this is by 2050. Okay, so this is Khosla's prediction of the AI impact of AI. Then there will be a billion bipedal robots, billion. Okay, then there will be a billion programmers. Okay, and then we will replace all coal-based plants by 2050. Okay. Now, how these predictions are related to impact on the job market? Okay, it is like 38% of the current skills will be obsolete by 2030. Even this is also obsolete because I don't know, by end of this year, many of the skills we don't require, and people are now talking of unlearning. Okay, until you unlearn something, you will not learn new things. So there is a now new trend: unlearning, relearning, reskilling. Okay, so or lifelong learning. So these are the buzzwords for today. So carpentry, of course, it will vanish. Plumbing jobs, welding, machine. So slowly these jobs are vanishing. Then data analysis will be there. Engineering, in medical. Then jobs, I will not go in to the much details of this because you can find it in my article. Okay. So job vulnerabilities are there, adapting skills for the AI future is there, emerging career opportunities, and balance of innovation and job security. Okay. So let us come to the specific things which are happening in the world. Okay. So 85% of the job companies are investing in workforce training. Okay. So why? Because democratization of research tools. So research outcomes are readily available, and many of the research findings were constrained or limited to US universities because they have invested billions of dollars for the research. And you might have heard that Chinese agencies, they penetrated into US university servers, and instead of conducting the same experiments using these techniques, they have stolen the data, and they don't now need to repeat these experiments which we are doing. So again, this is a very funny part related to research in academics. So we are reinventing the wheel. Okay, so instead of doing new research, so already if someone has done research or experimentation, we should not do it. And if you want to keep pace with China, okay. Then skill evolution between now and 2030.
Okay, so AI literacy, we will need AI literacy. So there is a myth that AI will do everything. So it's not like that. Still human. I will come to next slide, and which is more surprising. So it is not like that AI will reduce the number of jobs. In fact, because of AI, jobs are going to increase. So please give me a moment. Then data storytelling is like a new kind of we can say softwares wherein we don't need to go through huge amount of data. We need to make a story from that data, and we need to find a gist of that data. Computational modeling is one more thing. Uh, then what human centric skills we require? So we require critical thinking, ethical judgment, and cross disciplinary collaboration. Okay, so I should not shy away from understanding the highway structure. If I want to design a good automobile or a truck, so I must study the road infrastructure or highway engineering, so that I can build a very good model, or I can train a good model. It's a classical case study which you can search on the Google. It's a chemistry Nobel Prize has gone to AlphaFold AI. So what is AlphaFold AI? It's a Google model. Okay, so you can just Google it, and you will find this interesting story. There's a controversy also because this David Baker and Jumper and all this, they are like AI researchers. They are not core scientists in the chemistry, but still Nobel Prize has gone to these gentlemen last year, 2024 Nobel Prize, and this has like made a lot of headings. So they what they did, so they had devised some AI techniques so that drug development will be shortened. So here there is a big impact of AI on the drug development and jobs in the medical or pharmacy field. So this INSECO, so this is a very famous case study. You can also search up through the Google. Okay, so the drug, otherwise it will take, say, let us say many years. So they using AI, they developed a drug in 46 days, and this was like a big boon for the pharmacy industry. So it doesn't mean that jobs will vanish. In fact, it requires more job than earlier. Okay, because you are presenting some drug which otherwise you will be presenting 2 years later or a couple of years later, and now you are presenting the same drug in 46 days. Okay, so the efforts will be same. In fact, you require more resources than earlier. So we can't say that it will take away the, but yeah, certain jobs will go away. Okay, certain skills will be redundant, like typewriter. In earlier days, we used to use typewriter. Now we don't use typewriter, right? Okay. Then exoplanet search. Okay, so this is again a very big case study. So Kepler Space Telescope. So it was able to predict new exoplanets, which we were unable to search through the huge amount of data. Then CERN's machine. So are you aware of like how much data this CERN generate? So it generates almost terabytes of data in couple of seconds. So it's a huge data, huge data that CERN generate. And from that data, we need to gather this ghost particle, okay, or Higgs boson particle. Okay, so still these experimentations are going on, and they are improving its accuracy. So then AI cracks gene expression code. So you can see this. This is again a very good article on intakeonline.com. Okay.
Now let us come to in-demand technical skills. Means what we should tell students, or what we should also like inculcate in ourselves, so that we will be relevant for tomorrow. So it should not happen my students knows many things and I don't know about, let us say, quantum computing or anything else. Okay. So project management is a big skill. Six Sigma, lean management, conceptual thinking skills, counseling, mentoring, research, business analytics, affiliate marketing, those who are in MBA, social media. It's a time of social media. Okay. So sectors, construction, transportation, automation, 3D printing, communication, and training. So everywhere that AI ML will be there. Okay. So in almost every sector. So we can't figure out where AI ML is not there. Okay. Even for construction of bridges, even for construction of robots, transformers, electricity generation, automobile. So AI in automobile, if you just search, you will find what kind of evolution is going on in automobile. So automobile, just 10 years back, if you have purchased some automobile or a car, and if today if you purchase some car like BYD, so it is like amazing. So to learn about the new things and control, probably it takes couple of weeks. Okay. Now, what? Why and how? Okay, how we should now develop? Okay, so it's like attention memory. So this is like a classical thing which is there in books also. So now coming back to the key statistics. So what I had done, so I had referred this report. So I would like to copy this link. If it is, I don't know how I can copy. Okay, I will copy this link, and you also can search or go through this report. 170 million new jobs, okay, will be there, okay, and 92 million jobs will be like displaced, okay. So that's why I said initially, it is, there is no need of fear, okay. So more jobs will be created than the jobs which are going to like displaced or lost, okay. So nothing to worry about AI. So we need huge workforce. Okay. Only thing is that 59%, if you want to retain 59% of the workforce, they need reskilling. Okay. Let us say CNC operator is there, supervisor is there, chemist is there, forensic expert is there. So they need to be like, we need to train them so that they are like aware of AI technology. And 40% still it will be new and evolving. So we can't say, so today if I train someone on this technology, maybe by tomorrow a new technology will come. Okay, so that's the thing. Okay, I would like to conclude because the technology is like ever evolving, and we really can't predict. But yeah, these are the basic statistics which we can take as guidance. This is from the authentic source, World Economic Forum, which I have referred. So thank you for patient listening, and I am like open to take a few questions. Good afternoon, sir. Yeah. Hello. Yes, please go on. Yes. Okay, sir. I wanted to ask actually, in our academic institution, we are continuously developing the curriculum. Yeah. So how we can effectively integrate AI training so that we can prepare our students for the future job challenges? So yeah, if you ask me, there cannot be curriculum for AI. That is the first thing, because it's like application oriented. You need to apply this AI or machine learning in real scenario. I will take one example of this machine learning. Okay, my elder brother is having one company, onechoover.com. So you can visit. I will. So we were discussing, it's like our family company. We were discussing, see, this
KYC, all of you know, okay, right? So there is a big hurdle in KYC, and I get a lot of letters from many banks, and they say that you take these documents, make a Xerox, and come to the bank, and so I don't have time. I don't have that much time, okay. And like me, there are many people they don't want to. It's a waste of time, okay, going to bank, standing in a queue, okay, and then completing that KYC document, and okay. So he developed one model, okay. So that KYC is not now done like in physical mode, so it's like online mode, okay. So people they do it online, and there are like a person. So he implemented AI and ML for that. Okay. So the moment you show your card, okay, so it will grab all the text and it will grab your face, and it will try to match it with the one which is stored in your DigiLocker or Aadhaar card. So it's like a multiple level of authentication, and your KYC is done in 5 minutes. Okay, and it doesn't mean that jobs of that KYC person has gone. So in fact, it has increased because number of persons, those who are willing to do KYC, they will obviously increase. If someone tell me, यार 5 minutes लगता है आप कर दो online KYC. So he developed that KYC model. So likewise, there is one case study with doctors. So student need to apply this in practice. So I don't think there. Yeah, you can in curriculum you can include some real case studies or real examples only as a unit, but it's an application of AI. I don't think there can be curriculum, but yeah, there can be core subjects, okay, which will deal with the technologies used in machine learning. And of course, students should be well conversant of basic technology. Then adaptability and ability to like learn new thing is is something which is required, and not like because knowledge is ever evolving. So today if someone knows, and tomorrow if you say okay, if you take some interview and if you recruit one engineer and you are satisfied with his performance, and if he is not able to adapt the new technology which will develop in future, so what is the use of that? So what is required is adaptability. So we need to develop curriculum in such a way that students should learn on their own. So I will cite one more example. What happens in, let us say, European countries, maybe in Finland or Netherlands. So there they have parted away from that conventional teaching learning process. So instead of that, what teacher do, or even Japan or even Germany, because I trained one fellow in Toshiba company. So what they do, they ask students to like study. They give learning track to students, and students come prepared in a class, and they discuss it with their professor. So this is the new model which is evolving. Instead of professor preparing PowerPoint presentation and uh, teaching the students, so we should also part away from this kind of methodology. This is like a very old and classical. So it doesn't have any relevance in today's context. So we should adopt these Western or developed nation, or even in US, same thing happens. So student learn, the professor only gives learning track. So student prepare and he comes to the class, and he discuss it with the professor that what he has learned, and if he has doubt, then professor will explain. That's all. Okay, yes, thank you, sir. So, good afternoon, everyone. It is a great honor for me to extend a heartfelt vote of thanks on behalf of GH Raisoni College of Engineering and Management, Jalgaon, to Dr. Charudatta Pathak sir. And we have had the privilege of exploring the transformative impact of artificial intelligence on the job market through the expert insight of Dr. Charudatta Pathak sir. His comprehensive analysis has shed light on both the challenges and emerging opportunities
that AI presents, urging us to rethink traditional employment paradigms and prepare for a future where technology and human ingenuity go hand in hand. Dr. Pathak's discourse not only deepened our understanding of AI disruptive potential, but also ignited thoughtful discussion on how educators, policymakers, and industry leaders can collectively or collaboratively navigate this evolving landscape. His perspective on integrating AI into our workforce strategies and educational frameworks has been both enlightening and inspiring. As we conclude this session, I would like to extend my heartfelt thanks to Dr. Charudatta Patak sir for sharing his knowledge and insight with us today. Your expert analysis has provided us with a clear vision of how artificial intelligence is reshaping the job market, sir, and what steps we need to take to prepare for the future. We feel very honored and encouraged by your valuable guidance and presence. I am honored to have the opportunity to thank Honorable Sunil Raisoni ji, sir, Chairman Raisoni Education, for the continuous support and inspiration. I am thankful to Honorable Shreyas Raisoni, sir, Executive Director, for his guidance. Sir, your intervention and inputs always strengthen us for the institutional excellence. Again, I am also thankful to Dr. Preeti Agrawal, ma'am, Director, GH Raisoni College of Engineering and Management, Jalgaon, for her stewardship, support, and vision. My heartfelt thanks to Dr. Sanjay Shekhawat, sir, Dean Academics, for his strong guidance throughout the program. I am thankful to all head of departments, teaching and non-teaching staff, and students for making the event successful. Without your contribution, this success was not possible. So thank you. Thank you again, once again. So thank you all. Our next session will be start on 3:30. Session 4 on topic popular AI tools in education, and resource person Dr. Meenakshi Chawla, Professor St. John's College, Agra. So, ma'am, delivering this fourth session on 3:30. So, all of you join before 3:30. Thank you, Patak sir. Thank you, sir. Thank you. Welcome. So I have posted one link in the chat box. So I will request everyone to copy that link, which is there in the chat box. So it's a call for articles. And now that everyone knows that UGC care list has gone, so I was repeatedly raising the voice about that predatory practices of these journals. And shortly, I will be able to succeed to eliminate that the Scopus Index journal also. So I personally believe that there is not a single indexing. So like my journal is indexed in OpenIR. So UGC has agreed. So it's not that you should have that open Scopus index only. So any international indexing will do. So I'm happy to share that NTech magazine has been indexed in Open Science Project of European Union and CERN. It is like they have kindly extended grant for me, and every article published in the NTech magazine or NTech journal, which has ISSN number also, plus indexing in OpenIR, plus DOI. So every article we get DOI number. So that is enough as per the new UGC guideline. So I would like to welcome articles from the professors. And our main target audience is class 8 to class 12 students. So to apprise them what are the different subjects they will learn in their graduation. So the aim of this NTech magazine or NTech journal is that to apprise students about different career opportunities in science, technology, engineering, and mathematics. Thank you. Okay, thank you, sir. We will definitely forward this link to all our students and faculty members so that they can take advantage of this very good magazine. Yeah, thank you. Even students can write, even many students from even foreign countries, they are contributing to our website. So some of them are from like postgraduate students from
European countries, or some of them like researchers in USA. Even one fellow from Stanford University is joining us. So it's a good opportunity to publish the article. There is no article processing charge or publication charge. Okay, and this is again a free to subscribe and download. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Bye. Thank you very much.
नाही झालं ओपन झालं माझं पण सुरूच आहे Good afternoon, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Okay, so we just start in 2-3 minutes, ma'am. Okay, sure. Okay, good afternoon, all. I, Pooja Nawal, welcome you all for the today's last session of one-day national seminar on artificial intelligence in education, which is the future of learning. We have with us Dr. Meenakshi Chawla, ma'am, who is professor at St. John's College, Agra. Ma'am, we heartily welcome you on behalf of the CSIT-AI-DS AIML department of GH Raisoni College of Engineering and Management, Jalgoan. In this session, we will be enlightened with the popular AI tools used in education. Before starting, I would like to briefly introduce to our today's speaker, Dr. Meenakshi Chawla ma'am. She has completed her PhD from Dayal Bagh Educational Institute, Dayal Bagh, Agra, in year 2018. She is also NIT NET qualified
in 2019. Her area of interest are financial accounting, management accounting, taxation, as well as financial management. She is availing doctorate fellowship of ICSSR for social science students to pursue and complete their research work. During her PhD, her fourth semester experience has been taken in distance education program through video conferencing. 5 year experiencing as a visiting faculty for BCom vocational, BCom mains, and MCom. She is having 1 year experience as an assistant professor in BCom vocational insurance at St. John's College, Agra. Also, ma'am have published, attended various workshops and conferences and published various papers in the reputed national and international journals. We are very much fortunate to have such an esteemed guest with us. So over to you, ma'am. We are very much eager, awaited to hear you all. Thank you, ma'am. Thank you, Nilesh ma'am. Thank you so much for introducing me. And I want to thanks for the college to giving me an opportunity for giving this kind of lecture. Thank you so much. Shall we start now? Yes, ma'am. Okay. Now, today we are going to discuss on the topic popular AI tools in educations. Before starting this session, I just want to know about that. Everyone is knowing about AI, right? How AI is helpful in education, and we all know that, यानी कि हम सबको पता है कि AI का हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं. लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे सेशन में कि AI का जो यूज है हम एजुकेशन में कैसे करते हैं. ब्रीफली सब लोग यूज करते हैं, सबको पता है कि आजकल कौन कौन से AI टूल्स आ गए हैं, लेकिन उन AI टूल्स को बेटर वे में कैसे यूज किया जा सकता है, और आज हम इस सेशन के थ्रू डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो दीज आर द ओवरव्यू ऑफ माय स्टडी. फर्स्ट द इंट्रोड्यूस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन we discuss about the key functions of AI tool in education, then AI powered learning platforms. ठीक है, कौन कौन से हैं. After that I will discuss about AI tools for research and academic writing, and the next one is AI powered data analysis and visualizations, and after that AI based literature review and knowledge discovery, and lastly we discuss how AI helpful in academic administration. So first one is, what is आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सबको पता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करते हैं. एजुकेशन, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैसे एजुकेशन का जो रोल है एआई कैसे उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, राइट. एआई की हेल्प से बेसिकली हम क्या करते हैं एजुकेशन में, इट्स रेफर्स टू द पावर्ड एप्लीकेशंस. बहुत सारे हम एप्लीकेशंस का यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर एंड प्लेटफॉर्म डिजाइन टू एनहांस द टीचिंग, लर्निंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग ने सबने एआई का यूज अपने डे लाइफ में करते ही हैं. जैसे आप अगर अपना स्मार्टफोन यूज करते हैं तो आप एआई का यूज करते हैं, ठीक है, आप सबके और मल्टीपल सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं. लेकिन हमारी क्या है, एक एरिया क्या होता है कि जितना हमें वर्क होता है हम उतना ही टूल्स का बेसिकली यूज करते हैं. हम ये सोचते कि इसको हम और मतलब ब्रॉड वे में हम कैसे उसको एनालाइज पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं. तो जैसे एआई के लिए आपके पास क्या है, जैसे आपने कुछ जो सॉफ्टवेयर हैं आपने नेम सुना होगा, जिसमें से मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है दैट इज चैट जीपीटी. हमें पता है कि चैट जीपीटी किस तरीके से हेल्पफुल रहता है एजुकेशन पर्पस के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए, लेकिन उस चैट जीपीटी में बहुत सारे एडवांस वर्जन्स भी हैं. तो आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सो दीज टूल दैट इज हेल्प इन द मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करते हैं, डेटा एनालिसिस में हेल्प करता है, एंड इट ऑल्सो
प्रोवाइड द पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करता है, एंड दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन द इम्प्रूव आवर एजुकेशनल आउटकम्स। ठीक है, अगर सपोज मैं आपको बोलूँ कि कुछ टाइम तक आप बिल्कुल स्मार्टफोन का यूज मत करिए, कोई लैपटॉप्स का यूज मत करिए, इंटरनेट का कोई यूज नहीं करना, अपने स्किल से कुछ एक ऐसे राइटिंग करके दिखाइए, कुछ एप्लीकेशंस लिख के दिखाइए। मैं 100% श्योर हूँ इस चीज के लिए कि अगर आप स्मार्टफोन का यूज करते हैं, एआई का यूज करते हैं, तो आपका प्रेजेंटेशन ईच एंड एवरीथिंग डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि एआई अब हमारी एक लाइफ का पार्ट बन चुका है, एंड विदाउट एआई आपकी परफॉर्मेंसेस, आपकी ईच एंड एवरीथिंग मैं बोलूँ बिल्कुल उस चीज से रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ तक कि आज हम जो एक क्विज जो प्रिपेयर करते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, उस क्विज में अपेयर होने से पहले कहाँ से हेल्प करते हैं, फटाफट अपना नेट ऑन करा, एआई टूल्स की हेल्प से कुछ अपना थोड़ा सा पढ़ा और अपेयर हो गए। काफी कुछ, यानी कि आजकल की जो डिमांड के हिसाब से इन टूल्स को क्या करा है, जनरेट किया गया है, और इस तरीके से उसको प्रॉपर कैसे, मतलब उसको है कि आपके हिसाब से उसको पूरा जो बनाया गया है, और इसका आप बेटर यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं आगे करने में, राइट? These are the key functions of AI tools in education. For example, first one is personalized learning. So AI कैसे हेल्प करता है हमारी पर्सनलाइज्ड लर्निंग में? क्योंकि एआई की हेल्प से आप अपने कस्टमराइज लेसन प्लान्स प्रिपेयर कर सकते हैं एंड फीडबैक्स, लाइक यानी कि आपको सपोज एक लेसन प्लान प्रिपेयर करना है, और आप क्या करेंगे, एआई को पूरा इंस्ट्रक्शन दे देंगे, और जैसा आपको लेसन प्लान्स की रिक्वायरमेंट है, एग्जैक्टली वैसा ही लेसन प्लान क्या होगा, आपके सामने अवेलेबल होगा, राइट? नेक्स्ट इज ऑटोमेटेड ग्रेडिंग एंड असेसमेंट। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि आपका असाइनमेंट भी क्या है, लेसन प्लान्स भी क्या है, बच्चा एआई के थ्रू प्रिपेयर कर रहा है, लेकिन ग्रेडिंग एंड असेसमेंट भी आजकल एआई से हो रहा है। तो इसका मतलब कि अगर हम बोले कि टीचर्स के स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स को भी ये बेनिफिशियल मिल रहा है कि उसको वो ग्रेडिंग एंड असेसमेंट प्रोवाइड करें। ग्रेडिंग एंड असेसमेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे? बेसिकली क्या होता है, एआई में बहुत सारी चीजों की कोडिंग्स की जाती है। कोडिंग्स में क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज होती है, हम क्या करते हैं, उसमें एक पर्टिकुलरली क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं, और उन क्राइटेरिया के बेसिस पे क्या होता है, बेसिकली आपके पास जो है रेस्पॉन्डेंट्स आते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, गूगल क्लासरूम के थ्रू क्या करा, टीचर्स ने एक आपको एमसीक्यूज दे दिया, आप एट दैट टाइम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, और एआई की हेल्प से इमीडिएटली रिजल्ट आपके सामने आएगा। मींस आपका जो आंसर है इट इज करेक्ट और रॉन्ग आपको कैसे पता चलेगा? एआई की हेल्प से पता चलेगा। एंड यू कैन ऑल्सो यूज द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे आपने एक ओपन हैंडेड अगर क्वेश्चन है इसको देखा हो, क्वेश्चन है, एक ब्लैंक स्पेस आपके पास गिवन है, सो यू कैन राइट, आप अपने ओपिनियंस उसमें लिख सकते हैं। एंड बेसिकली मैंने क्या बोला कि एआई स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स की भी हेल्प करता है, और इसी वे से क्या होता है, जो टीचर्स की जो वर्कलोड है वो काफी रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, ये जो गूगल क्लासरूम का एग्जाम्पल हम लोगों ने कोविड टाइम पे काफी इसको पर्सनली यूज किया था, कि जैसे आपको असाइनमेंट है, टीचर्स कैसे प्रोवाइड कर रहा है, गूगल क्लासरूम के थ्रू कर रहा है। आपको असाइनमेंट पूरा सबमिट करना है, सबमिशन के बाद आपके पास पूरा रिप्लाई आएगा, मेल आएगा कि योर असाइनमेंट हैज बीन सबमिट, एटलीस्ट आंसर्स आपको पता है, स्कोर पता है, यानी कि करेक्शन वर्क रिड्यूस हुआ, पेपर का जो वर्क है वो रिड्यूस हुआ। तो एक तरीके से एआई अगर हम बोले तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है, राइट? नाउ थर्ड इज इंटेलिजेंट ट्यूटोरियल सिस्टम। देखिए एआई में बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे ट्यूटोरियल्स होते हैं, जैसे काफी सारी जो वर्कशॉप्स हैं वो ट्यूटोरियल के थ्रू होती हैं। जैसे आईआईटीज है, वहां पर अगर हम वर्कशॉप्स लेते हैं तो उन वर्कशॉप्स के लिए आप देखेंगे कि टीचर्स और जो स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन तो बहुत कम हो रहा है। एक ट्यूटोरियल अपना उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, और उस ट्यूटोरियल के थ्रू क्या कर रहा है कि जब है उसको मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली क्या वन बाय वन हर एक जो लेसन्स है जो हम जो है स्टूडेंट को प्रोवाइड करते रहेंगे। एंड आफ्टर दैट उसमें लास्ट में एक टेस्ट है, उन टेस्ट में भी क्या करेंगे, आप अपियर्ड होंगे और उसमें बताएंगे कि कितना आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल हुआ। यानी कि सब
कुछ वर्क सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है। प्रेजेंटली वहां पर कोई टीचर 100% प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ अपने रिकॉर्डिंग लेक्चर्स है। आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर्स प्रेजेंट कर दिए जाएंगे, आपको डेटाज मटेरियल सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इवन जो टेस्ट है वो भी क्या है, एक बार डिजाइन करके अपलोड करना है, और मैक्सिमम पर्सन वहां पर कर सकते हैं। तो आप आईआईटी के जो ट्यूटोरियल्स है उस पर कोई भी अगर कोर्स करना चाहते हैं, स्पेशलाइज जो रिसर्च सॉफ्टवेयर का है, आर स्टूडियो एंड ऑल, आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। तो एआई बेसिकली हमें क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में भी हेल्प करता है। देखिए एआई का जो अगर हम देखें, सब कुछ कवर अप कर रखा है एआई ने, यानी कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी आजकल की प्रेजेंटली डिमांड है, हमारी वर्कलोड को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब देखिए जैसे कैसे है, शेड्यूलिंग करना, अटेंडेंस, मैंने बताया गूगल क्लासरूम है, अटेंडेंस ऑटोमेटिक हो जाती है, ठीक है। पेपर वर्क रिड्यूस, टीचर्स का वर्क भी रिड्यूस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एआई के थ्रू क्या होता है, बेसिकली टीचर्स का भी अटेंडेंस रिकॉर्ड है, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स रख रहे हैं तो वो भी आपकी हेल्प करेगा। ट्रैकिंग, बहुत सारे जो ऑफिसर्स होते हैं वो ट्रैकिंग एंड लोकेशंस क्या है एट द टाइम आपके से रिक्वायरमेंट करते हैं कि आप अपना ट्रैकिंग एंड लोकेशन भेजिए कि आप कहाँ से बैठ के ये वर्क कर रहे हैं। ये आजकल आईटी सेक्टर्स में बहुत मैंडेटरी हो गया है, ठीक है। यानी कि आपका जो एम्प्लॉय है, क्योंकि काफी सारी कंपनीज है स्पेशली आईटी सेक्टर्स एंड ऑल में, उसमें इस चीज की डिमांड है कि आपका जो वर्क है आईटी सेक्टर का वो किस तरीके से मतलब है कि वर्क फ्रॉम होम आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन उन वर्क फ्रॉम होम में आपकी ट्रैकिंग इट इज मैंडेटरी। एंड लास्ट वन इज रिसोर्स मैनेजमेंट, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज वर्चुअल असिस्टेंट्स एंड चैट बॉक्स। तो वर्चुअल असिस्टेंट एंड चैट बॉक्स अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, चैट जीपीटी एंड ऑल, किस तरीके से आप इसके 24/7 आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड एआई आल्सो हेल्पफुल इन एनहांस द एक्सेसिबिलिटी, कैसे करता है, स्टूडेंट एंड डिसेबल पीपल्स की हेल्प करता है। जैसे अगर मैं बोलूँ किसी बच्चे के अगर हाथ नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, अपने स्पीच के थ्रू, अपने टेक्स्ट के थ्रू भी ये सारी चीजों को प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। एंड इट इज द Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, slides are not changing. It is showing first slide only. Why it is not changing? But ma'am, wait. Now it is okay, ma'am. Now it Okay. has changed. Okay, ma'am. Okay, but I am continuously changing. Okay, don't know the issue. Okay, ma'am. Thank you. Okay. And it is also helpful in enhance the accessibility, right? Real time translation, Microsoft help कर सकता है। आपकी वॉइस के थ्रू भी बहुत सारे जो स्पीच है, टेक्स्ट है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, एक्सेसिबल है कि एआई के लिए। इवन जो डिसेबल पर्सन है, अगर हम बोलें कि जो पर्सन अगर उनको कुछ ऑटिस्टिक है, कुछ प्रॉब्लम है, स्कूल में नहीं अपेयर्ड हो सकते किसी तरीके से, लेकिन अपने एआई के थ्रू ये सब काम वो बैठे बैठे कर सकते हैं, राइट। जो मैंने आपको अभी बताया था कि ट्यूटोरियल की हेल्प से पढ़ सकते हैं, तो अब स्टूडेंट को भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो जरूरी नहीं है कि वो स्कूल जाए, ठीक है, वो घर बैठकर भी प्रॉपर एजुकेशन ले सकता है। और उनका जो टेस्ट है वो भी आजकल ऑनलाइन हो सकते हैं। तो एआई ने सिर्फ क्या पर्पस है एआई का, कि एजुकेशन प्रोवाइड करना, लेकिन उन एजुकेशन का जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड कर दिया है। हमारे पास तो पॉपुलेशन, कैसे मैक्स टू मैक्स जो पॉपुलेशन है वो एजुकेट हो सकती है विद द हेल्प ऑफ एआई, ठीक है। Ma'am, now I'm changing my slide. Is it visible or not? Yes, ma'am. Yes, it is visible. Okay. Now, these are the AI powered learning platforms. So, number one is ChatGPT, बहुत पॉपुलर है। ChatGPT ओपन AI सिस्टम है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन कुछ फंक्शंस जो है इसके चार्जेबल है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज कोर्सेरा एआई। ये अगर आप लोगों ने कुछ असाइनमेंट्स का दिया है तो असाइनमेंट अगर आपके कॉलेजेस में प्रोवाइड कर सकते हैं, तो मल्टीपल जो है स्टूडेंट्स है, एक ग्रुप है वो कोर्सेरा का यूज करता है। एंड थर्ड वन इज स्क्रिप्सेंस। सो अगर कोई बताना चाहता है कि इनमें से कितनों ने जो कोर्सेरा एंड स्क्रिप्सेंस के नेम सुना है, चैट जीपीटी इट इज मोस्ट पॉपुलर। अगर मैं बोलूँ कि फोन में, तो 90% के ये फोन में चैट जीपीटी ऐप मिलेगा, क्योंकि आपके जो असाइनमेंट्स है, लर्निंग है, बहुत इजी कर दिया,
ठीक है, इसके जो सिंबल्स हैं ये भी मैंने अटैच करे हैं, तो आपको शायद आइडिया हो जाए कि चैट जीपीटी अगर है तो उसका आपके पास कैसा है, राइट। अब देखिए चैट जीपीटी कौन कौन सा होता है, देखिए जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, हमने बोला है चैट जीपीटी, तो चैट तो सबको पता है, लेकिन जीपीटी क्या है, इट इज जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, जनरेटिव मीन्स कि चैट जीपीटी की हेल्प से आप मॉडल्स भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। जनरेट टेक्स्ट बेस्ड टू गिवन द इनपुट, फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपके पास कोई मॉडल गिवन है और आपको उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। कई बार ऐसा होता था कि आप पहले इधर जो है अब किसी फ्रेंड की हेल्प ले रहे हैं, सीनियर्स की हेल्प ले रहे हैं, प्रेजेंटेशन है कैसे करें, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको मॉडल क्रिएशन करना है तो भी चैट जीपीटी आपकी हेल्प कर सकता है, मॉडल का एक्सप्लेनेशन चाहिए चैट जीपीटी हेल्प कर सकता है, इवन उसका स्लाइड प्रेजेंटेशन चाहिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो स्लाइड कौन सी कैसे प्रिपेयर करनी है ये भी चैट जीपीटी आपको हेल्प प्रोवाइड कर देगा। कैसे, मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगी और आप अपने फोन में इसको ओपन कर सकते हैं, राइट। उसके बाद है प्री ट्रेन क्या होता है, जैसे चैट जीपीटी का क्या है, लार्जेस्ट डेटा सेट है। अगर आप अपने एरिया से अपने बेसिकली कोर्स से रिलेटेड कुछ भी सर्च करते हैं या फिर कोर्स के अलावा भी बहुत कुछ सर्च करते हैं, तो आपको क्या है उसके जो रिजल्ट्स है चैट जीपीटी पे मिलेंगे। मैंने बहुत रेयर देखा है कि शायद वो ऐसा कुछ कमांड दे कि दिस टाइप ऑफ कॉन्टेक्स्ट इज नॉट अवेलेबल। बहुत बड़ा डेटा सेट है। जैसे मैं बोलूं कि अगर आपका कोई फ्रेंड आपसे नाराज हो गया है और उसके लिए सॉरी मैसेज क्रिएट करना है, तो चैट जीपीटी उसमें भी आपकी हेल्प करेगा। मतलब अगर आपका इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है, ये तो आपको प्रोवाइड करता ही है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी कुछ कॉन्टेक्स्ट चाहिए तो चैट जीपीटी की आप हेल्प ले सकते हैं। एंड द लास्ट एंड द टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, बेसिकली इट इज अ प्रोसेस इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट एफिशिएंटली। जैसे अगर आपने कुछ भी टाइप करा है तो आपकी जो टाइपिंग है वो मतलब एक्चुअली क्या सेंस क्रिएट करता है। जैसे मैं बोलूं कि आपने एक मैसेज टाइप करा, पर मैसेज आपको प्रॉपरली टाइप करना नहीं आया और आपने क्या करा, कुछ कोड वर्ड्स उसमें लिख दिए। सो एआई की हेल्प से क्या है, चैट जीपीटी का सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उसको इजीली इसको समझेगा और आपको क्या करेगा, जो रिजल्ट्स आपको चाहिए करेगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि चैट जीपीटी में एक रफली आपने ड्राफ्ट नोट क्रिएट कर लिया और उसको बोला कि रिफ्रेम करो, तो प्रॉपर रिफ्रेम कर कर भी वो आपके सामने क्लियर पिक्चर प्रेजेंट करेंगे, राइट। अब जैसे चैट जीपीटी क्या है, बेसिकली कैसे हेल्प करता है, ये देखिए। चैट जीपीटी असिस्ट द स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स, ठीक है, बाय आंसरिंग द क्वेरीज में आपको हेल्प करेगा, समराइजिंग आर्टिकल्स में भी आपको हेल्प करेगा, जनरेटिंग कंटेंट, ये तो बहुत ज्यादा यूजफुल है टीचर्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी कि सबमिट करना असाइनमेंट तो, एंड प्रोवाइडिंग द एक्सप्लेनेशन फॉर कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि टॉपिक्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, आप कॉलेज में नहीं प्रेजेंट हुए, एब्सेंट है, आप एआई की हेल्प से यानी कि चैट जीपीटी के थ्रू पढ़ सकते हैं। कोई चीज का अगर आपको बेटर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो चैट जीपीटी की आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें मैंने एक एग्जांपल भी कोट किया है, अ स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विद द रिसर्च पेपर। शायद अगर आपका एरिया रिसर्च फील्ड है तो रिसर्च पेपर, या फिर आप उसमें एक रिसर्च प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं, या असाइनमेंट का भी आप इसमें एग्जांपल कोट कर सकते हैं। अ स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विद द रिसर्च पेपर कैन यूज चैट जीपीटी टू जनरेटिंग एन आउटलाइन, ठीक है। वो आपको आउटलाइन प्रोवाइड करेंगे कि क्या क्या चीजों में आपको लिखना है। जैसे रिसर्च पेपर में मोस्टली पहले हम टाइटल डिसाइड करते हैं, आफ्टर दैट एब्स्ट्रैक्ट के कीवर्ड्स लिखना, देन इंट्रोडक्शन, रिव्यूज, आपकी पूरी रिसर्च मेथोडोलॉजी, हाइपोथेसिस और फिर उस ऑब्जेक्टिव की वर्किंग, एंड लास्ट में कंक्लूड करके आपको रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी। तो ये क्या है, एक आउटलाइन प्रोवाइड करी, ठीक है। इट गेट द सजेशन फॉर द सोर्सेस, आपको लिंक्स प्रोवाइड करेंगे, एंड रिफाइन देयर राइटिंग, आप अपने ही कॉन्टेक्स्ट को वहां पर अपलोड कर दीजिए और आप क्या करेंगे, उस चीज का अगर आप रिफाइनमेंट यानी कि उसको रिफ्रेम करना चाहते हैं कॉन्टेक्स्ट को, तो वो बिल्कुल रिफ्रेम करके देखेगा, हर तरीके से आपकी हेल्प करता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये सब चीजें क्या होता है, इसमें क्या है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको जस्ट एक सिंगल कमांड देना है, कमांड देने का भी इसमें स्टाइल है, ये नहीं कि प्रिपेयर ये
आपको बहुत तरीके से सलीके से एआई को देना है, सो प्लीज प्रिपेयर द असाइनमेंट ऑन सो एंड सो, तो आपको देगा। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। जैसे चैट जीपीटी की अगर हम बात करें तो ड्रॉबैक इसका ये है कि कई बार ऐसा होता है, क्योंकि ये एआई है, मशीन बेस्ड है, तो आपको जिस रेफरेंसेस में चाहिए, कई बार ऐसा होता है कि रेफरेंसेस मिक्स्ड भी हो जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि मेरा एरिया सोशल साइंस का है, कई बार ऐसा होता है कि सोशल साइंस रिसर्च से कब साइंटिफिक रिसर्च में मूव कर जाता है, इसका कंटेंट पता ही नहीं चलता। इसके लिए ये नहीं है कि आप अपना पढ़ना छोड़ दें। आपको कैसे यूटिलाइज करना है, आपने इंस्ट्रक्शन दिया, कमांड दिया, आपके पास डेटास पूरे अवेलेबल है। अब क्या करेंगे आप, डेटास जब अवेलेबल है आप उसको एक बार पूरा प्रूफ रीड करेंगे एंड आफ्टर दैट फाइनलाइज करेंगे कंटेंट को। ऐसा नहीं है कि हाँ आ गया कॉपी पेस्ट करा, ठीक है। जब आप फाइनल जो है एग्जाम्स में पेयर हो या कुछ है, या आपका जैसे कहीं आपको प्रेजेंटेशन देना है, वहां क्वेश्चनिंग में आपको कुछ पता ही नहीं होगा, क्योंकि आपने जस्ट कॉपी पेस्ट करा है। आपने क्या लिखा है, एटलीस्ट आपको इस चीज का आइडिया होना चाहिए ना। एआई बेसिकली हेल्प करता है कंटेंट जनरेशन में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना पूरा ही जो एफर्ट्स है खत्म कर दे, जीरो एफर्ट्स कर दे। नहीं, आपको अपने स्किल्स, एफर्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको उसका प्रॉपर यूज करना है, राइट। तो चैट जीपीटी कैसे हेल्प कर देगा आपकी इन सब में, सिर्फ आपको प्रोवाइड करेगा कंटेंट, आपका मटेरियल, आप जो कमांड देंगे आपकी वो हेल्प करेगा, लेकिन कहीं से भी वो आपको ये देगा कि आपका जो है कि बिल्कुल करेक्ट सोर्स से नहीं, वो आपको पढ़कर ही पूरा करना है। ठीक है, मतलब कि एक तरीके से आपका जो टाइम जाता था असाइनमेंट लिखने में ये सब, तो वो वर्क को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन आपको उसके बाद की जो मेहनत है वो खुद करनी है, राइट। अब देखिए चैट जीपीटी एजुकेशन में कैसे यूजफुल है। जैसे हम बोले टीचर्स के लिए, तो फॉर लेसन प्लानिंग, तो टीचर्स को जैसे अगर एक स्ट्रक्चर्ड लेसन प्लान चाहिए, तो एक स्ट्रक्चर्ड लेसन प्लान का आपको फॉर्मेट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, टीचिंग मटेरियल्स, जैसे मैं बोलूँ कि अगर मुझे कोई जैसे सपोज आपके इस पे लेक्चर डिलीवर करना है, तो कुछ कंटेंट मुझे चैट जीपीटी से हेल्प मिली कि ऐसी ऐसी चीजें मैंने कुछ कई जगह पे पढ़ी जो जिसके बारे में हम लोगों को पता ही नहीं होता। जैसे जब मेरा रिसर्च वर्क मैंने किया था, तो उस टाइम पर ये चैट जीपीटी एंड ऑल था ही नहीं, और अगर होता तो मुझे काफी हेल्प मिलती। उस टाइम पर मैंने क्या करा, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, आर्टिकल्स पढ़े, जर्नल्स पढ़े, समराइज करा, राइटिंग वर्क करा, ये ठीक है। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो इस चीज के वर्क को क्या है, काफी रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, सो लेसन प्लानिंग टीचर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, कि चैट जीपीटी ने इस चीज का वर्क बहुत इजीएस्ट कर दिया। नेक्स्ट वन इज रिसर्च असिस्टेंस। तो रिसर्च असिस्टेंस में क्या है, जैसे समराइज एकेडमिक पेपर्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। ठीक है, सजेस्ट द रेलिवेंट लिटरेचर एंड रिजल्ट, सब कुछ आपको चैट जीपीटी प्रोवाइड करेगा। आपके एरिया से रिलेटेड जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होते हैं, जो प्रीवियस स्टडी हुई है वो सब आपको प्रोवाइड करेगा। पर्सनलाइज टीचिंग कि कैसे करना है, डिफरेंट वे से कैसे जो है कि, क्योंकि हमारे पास क्या लर्निंग ग्रुप बहुत सारा क्लास में अवेलेबल होता है, तो कैसे हम उसको एक्सप्लेनेशन दे कि हर एक बच्चे को उनके वो समझ में आए कंटेंट। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन करना, जैसे मैंने बताया कि हेल्प करता है प्रेजेंटेशन में, केस स्टडी में, लेक्चर नोट्स में, ईच एंड एवरीथिंग it provide by the chat gpt. And last one is assessment and feedback. ये भी मैंने बताया कि जैसे टेस्ट क्वेश्चंस होते हैं, आपको evaluate करता है आंसर्स को। इवन हम कुछ क्विज जो है अगर जनरेट करना चाहे तो हमें चैट जीपीटी के थ्रू हो जाएगा, लेकिन इसके बहुत सारे ड्रॉबैक भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी कुछ दिन पहले आया था कि एक जो पेपर है किसी यूनिवर्सिटी में, वो आउट ऑफ कोर्स था। ठीक है, आउट ऑफ कोर्स के बाद क्या हुआ कि उस टीचर्स को बुलाया गया कि जिन्होंने पेपर्स क्रिएट करा था, और पूछा गया, तो उन्होंने पता सिंपली क्या, टीचर ने एडमिट करा कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मैंने क्रिएट नहीं करा है, ये मैंने चैट जीपीटी के थ्रू किया है। बट चैट जीपीटी के थ्रू क्वेश्चन पेपर क्रिएट हो गया, जो आप में यूनिट्स थी क्वेश्चन आ गए, पर काफी कुछ जो कोर्स है वो आउट ऑफ द कोर्स क्वेश्चंस भी क्रिएट हो गए। उसमें आपका पेपर था मास्टर्स का, कोर्स आ गया बीकॉम्स का, 12th का, 10th का, सब कुछ का। लेकिन आपका क्या है कि टीचर एक
आइडिया तो ले सकता है चैट जीपीटी पर जो फाइनल पेपर है वो आपको अपने स्किल से बनाना है। यानी कि अगर आप सोचो कि मेहनत करना हम एआई की हेल्प से बंद कर देंगे, तो फिर सोचिए कि एम्प्लॉयमेंट ही खत्म हो जाएगा, फिर तो एम्प्लॉयमेंट का कोई रोल ही नहीं रहा, क्योंकि सब काम जब मशीन से कर रही हैं तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन के लिए हमें जितना 8% है एम्प्लॉयमेंट का, वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। राइट, हम यानी ये नहीं बोलूंगे ट्यूटोरियल्स अगर चल रहे हैं तो टीचर्स की रिक्वायरमेंट नहीं, टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि टीचर्स का काम है कि जो अपनी नॉलेज है उसको अपडेट करें और आज के टाइम के हिसाब से करें। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जीरो वर्क हो गया, यानी कि टीचर्स है आराम से बैठेंगे और चैट जीपीटी पूरा काम करेगा, नहीं। तो जो इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट के लिए वो टीचर के लिए भी है। अगर हमारे वर्क को हेल्प करता है रिड्यूस करने में, मतलब बर्डन को रिड्यूस करता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही काम खत्म कर दे। तो ऐसे बहुत सारे आप एग्जांपल्स अपनी लाइफ में देखेंगे, लेकिन चीजों को का यूज है पर जिसका ड्रॉबैक भी है। राइट, ठीक है। आप देखिए कि स्टूडेंट्स के लिए कैसे हेल्पफुल होगा, जैसे आपके होमवर्क में हेल्प कर सकता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, आप एग्जाम्स में जा रहे हैं, इतनी बुक्स है, नोटबुक्स है, कहाँ कौन से पेज नंबर ओपन करें, सिंपली चैट जीपीटी पे कॉन्टेक्स्ट पढ़ लिया और आपका काम हो गया। मतलब एटलीस्ट रिविजन तो हो ही सकता है आपका। एग्जाम की प्रिपरेशन, जैसे मैंने बताया कि कोई मॉक टेस्ट प्रिपेयर है वो आप कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स हैं। ठीक है, लैंग्वेज का इम्प्रूवमेंट, ग्रामर, राइटिंग स्किल्स एंड एकेडमिक राइटिंग, ये सब आप अपने चैट जीपीटी के थ्रू कर सकते हैं। इंटरैक्टिव लर्निंग्स होते हैं, जैसे बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, स्पेशली जैसे कुछ हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आपके कुछ सब्जेक्ट हो गए साइंटिफिक लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जैसे मैं बोलूं कि अगर सोशल साइंस रिसर्च में अगर हम बोले टैक्सेशन के बारे में, एक सब्जेक्ट है इनकम टैक्स, मल्टीपल रूल्स है, बच्चे याद ही नहीं कर पाते। तो जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है वो क्या होता है, कई बार एग्जाम में जस्ट अपेयर होने से पहले थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो और रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, अगर किसी चीज को रिलेट करना है तो सब कुछ आपको हेल्प प्रोवाइड होगी। लेकिन चैट जीपीटी का क्या है, कुछ पार्ट है, यानी कि अगर हम बोले कि कॉन्टेक्स्ट प्रिपेयर करने का, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन अगर इसमें ग्रामर अगर आपको देखनी है, कुछ आपको एनालिटिकल वर्क करना है, तो इसके लिए आपको क्या है, कुछ उसके जो चार्जेस होते हैं वो पेड करने होंगे। चैट जीपीटी को आप एक्सेल में भी यूज कर सकते हैं, मतलब एक्सेल फाइल अपलोड करके, और मल्टीपल सॉफ्टवेयर में यूज कर सकते हैं, बट वो उसका एडवांस एंड पेड वर्जन है। अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट है सो यू कैन पे, और अगर नहीं है तो ऐसे ही आपके काफी हेल्प कर सकता है। सिंपल है, कुछ नहीं करना, आप गूगल पर कमांड दीजिए कि चैट जीपीटी, ओपन चैट जीपीटी, तो आपके पास एक लिंक आ जाएगा ट्राई चैट जीपीटी में। ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक करेंगे तो आपसे वो लॉगिन की रिक्वायरमेंट करेगा। लॉगिन आपको कैसे करना है, या तो आप अपने गूगल फेसबुक के थ्रू कर सकते हैं, या आप अपना पर्सनलाइज अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, एंड यू कैन गो थ्रू इट। ओके, एक और चीज है, जैसे अगर मैं बोलूं कि कोई अगर आपका ग्राफ है, ठीक है, और कोई पिक्चर है, तो आपको उसका इंटरप्रिटेशन करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसका क्या करेंगे, जैसे अटैच फाइल होती है मेल में, वैसे सेम अटैच का ऑप्शन आएगा, आप अटैच कर दीजिए, पूरा डिटेल आ जाएगा डिस्क्रिप्शन। इवन अगर आपको कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आप उसके थ्रू बस आपको कमांड प्लेस करना है और आपका जो है सॉल्यूशन पूरा का पूरा उसमें आ जाएगा। लेकिन विदाउट पेड, यानी कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट चैट जीपीटी है उसमें लिमिट है, यानी कि सिर्फ 3 बार आप इस चीज का यूज कर सकते हैं इन अ डे, यानी कि वंस इन अ डे आप थ्राइस टाइम उसको यूज कर सकते हैं अपलोडिंग वर्जन को। ठीक है, बाकी कॉन्टेक्ट की कोई लिमिट नहीं है, आप उसको 24/7 कभी भी यूज करें। लेकिन जो हम अपलोड करते हैं, अटैच करते हैं फाइल, और उसका इंटरप्रिटेशन के लिए, जैसे अगर मैंने सपोज ये स्लाइड पर ये पिक्चर दिख रही है, आपको कंटेंट इसका हिंदी में चाहिए, मैंने क्या करा, सिंपली इसकी इमेज क्लिक करी या इसका स्क्रीनशॉट लिया और मैंने इस फाइल को अपलोड कर दिया, राइट। और मैंने बोला कि प्लीज ट्रांसलेट इनटू हिंदी, हिंदी में पूरा कॉन्टेक्स्ट मेरे पास हो जाएगा। लेकिन जो अटैच सिस्टम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ थ्राइस टाइम ही अवेलेबल है इन अ डे, और उससे ज्यादा अगर आपको यूटिलाइज करना है सो आपको उसका पेड वर्जन भी एक्टिव कराना होगा, राइट। ठीक है, नेक्स्ट एआई लर्निंग प्लेटफॉर्म है हमारे पास, कोर्सेरा एंड EDX-AI। ठीक है, कोर्सेरा का नाम तो शायद ही किसी ने सुना हो, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ किस लिए आपको हेल्प करता है। देखिए,
कोर्सेरा वर्क क्या होता है कि जैसे अगर हमारे पास असाइनमेंट्स होते हैं, ठीक है, आपने क्या करा, अपने असाइनमेंट्स को आपका था और आपने क्या करा, उसे अपलोड करा, तो ये आपको क्या करता है, एक ऑटोमेटेड ग्रेडिंग्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एंड इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस कैसे किस तरीके से करेगा, जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, जैसे चैट जीपीटी देता है ना, वैसे ये भी है, लेकिन इसका क्या है, पर्सनलाइज। जैसे मैं बोलूं कि आपने क्या करा कि कोई एक इसका ट्यूटोरियल्स में हमने क्या करा, एक सपोज एक कुछ इंस्ट्रक्ट फीड कर दिए कि अगर आपके पास इतना वर्क करेक्ट है तो ग्रेड ए आएगा, आपका इतने परसेंट से इतने वर्क करेक्ट है देन ग्रेड बी है, देन सी है, देन डी है। तो आपके वर्क के अकॉर्डिंगली आपको क्या करता है, कोर्सेरा ग्रेडिंग्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। मैं बताऊंगी किस तरीके से आप इसको एजुकेशन में हेल्प मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, पर्सनलाइज क्विज भी आपके लेता है, जो आपने पहले मिस्टेक्स करी हैं उसके वो भी इम्प्रूव कैसे आपने किया है या फिर आप कैसे क्विज की हेल्प से कर सकते हैं, तो कोर्सेरा आपकी इस तरीके हेल्प करता है। जैसे मैं बोलूँ कि पर्सनलाइज लर्निंग आपके पास है कि जैसे एक कंटेंट था, एक आपने क्या करा, असाइनमेंट प्रिपेयर करा और आपने क्या करा, कोर्सेरा पे अपलोड कर दिया। ग्रेडिंग आई सपोज बी, तो आपकी जहां जहां मिस्टेक्स थी क्या करेगा, कोर्सेरा एआई की हेल्प से उसको हाईलाइटेड कर देगा। उस एआई की हेल्प से आप उसको कैसे करेक्शंस कर सकते हैं एंड दोबारा आपकी जो ग्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट है कि नहीं, तब जाकर आप अपने कॉलेजेस में फाइनल असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, समझे। यानी कि एक आपको टास्क दिया, एक आपको असाइनमेंट दिया, आपने प्रिपेयर करा, कोर्सेरा पर आपको अपलोड करना है, वहां पर आपके पास क्या हो जाएंगे, सारी के सारी डिटेल्स आ जाएंगी और कहाँ कहाँ मिस्टेक्स है वो हाईलाइटेड होगा। सो हाईलाइटेड जो पोर्शन होता है उसमें वो आपको बताना है कि वो जो हाईलाइटेड पोर्शन जो है वो आपके मिस्टेक्स है और आपको करेक्शन करके दोबारा उसको एडिट कर सकते हैं। प्लस कोर्सेरा आपके क्विज में भी हेल्प करता है, जैसे कुछ एक क्विज प्रिपेयर किया आपके असाइनमेंट के बेसिस पर और उस क्विज में आपके पास है, जैसे सपोज आपने दिया और कुछ आंसर रॉन्ग है, तो डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके पास गिवन है। मतलब कि अगर आप बुक्स एंड कॉपीज को छोड़ के इन एआई को भी प्रॉपर टूल्स को यूज करना स्टार्ट कर दे तो आपकी काफी हेल्प होगा, ठीक है। ऑटोमेटेड ग्रेडिंग एंड फीडबैक, आपके असाइनमेंट को अपलोड करना है तो ऑटोमेटेड ग्रेडिंग आपको मिल जाएगी इसमें, ठीक है। और आपके पास ये भी है कि कंपटीशन के टाइम में कोर्सेरा इज वेरी हेल्पफुल, ठीक है। इंटरैक्टिव एंड एंगेजिंग कंटेंट पूरा आपके पास अवेलेबल होगा। डेटा ड्रिवन इनसाइट, देखिए डेटा क्या होता है कि आपके पास है ना कि काफी सारे जो वर्क आपके जो एरिया है, जैसे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, काफी सारी जो डिटेल्स आपको चाहिए होती है, काफी सारी टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड आपके पास डेटाज होते हैं, तो आपको जिस तरीके का डेटा चाहिए और जिस तरीके का वर्क आप करते हैं, तो एक तरीके से कोर्सेरा उसमें काफी ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए कर सकता है, ठीक है। कोलैबोरेशन एंड नेटवर्किंग, कोलैबोरेशन की देखिए कैसे आपके साथ क्या है, कोर्सेरा एआई एंड ईडीएक्स एआई। ईडीएक्स का मतलब आपने शायद ही सुना हो, दैट इज ईडी स्टैंड फॉर एजुकेशन एंड एक्स स्टैंड्स फॉर इंटरैक्टिव यानी कि कौन कौन से जो लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल होता है, ठीक है। एंड एआई में क्या कर सकते हैं आप, अपना कोर्स डिजाइन भी स्पेसिफिकली करना चाहे तो आप कोर्सेरा की हेल्प से एआई में भी कोर्स डिजाइनिंग कर सकते हैं, राइट। एंड थर्ड वन इज एआई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, क्योंकि एआई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैंने बताया था कि 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन जो था वो चैट जीपीटी था, सेकेंड वन इज कोर्सेरा एंड थर्ड वन इज स्क्रिप्ट सेंस। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्क्रिप्ट सेंस की, ठीक है। स्क्रिप्ट सेंस का वर्ड जो है मुझे पता है कि चैट जीपीटी क्या है, बहुत पॉपुलर हो चुका है, पर स्क्रिप्ट सेंस अभी उतना पॉपुलर नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये भी आपको स्क्रिप्ट सेंस क्या कर देगा, ग्रेडिंग तो प्रोवाइड करता है लेकिन इवैल्यूएशन भी आपका कर सकता है ऑफ हैंड रिटन एंड प्रिंटेड असाइनमेंट। जैसे आपके अगर हैंड रिटन असाइनमेंट है, आप उसको स्क्रिप्ट सेंस पर अपलोड कर सकते हैं और उसका पूरा ग्रेडिंग एंड इवैल्यूएशन कर आपको स्क्रिप्ट सेंस प्रोवाइड करेगा, राइट, ठीक है। एंड ये क्या करता है, बेसिकली इसकी हेल्प से जो एजुकेशन है वो काफी एफिशिएंट हो गया है टीचर्स एंड स्टूडेंट के लिए। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आप हैंड रिटन कैसे अपलोड करेंगे, जो टीचर्स क्या करते हैं, जैसे आपने हैंड रिटन कोई असाइनमेंट लिखा और स्कैनर के थ्रू उस कॉपी को स्कैन कर लिया, ठीक है, पीडीएफ फाइल बना ली, अब आपने क्या करा, उसको अपलोड कर दिया। अब वो आपके हैंड रिटन असाइनमेंट को भी रीड करेगा, प्लस उसमें इवैल्यूएशन एंड ग्रेडिंग सब कुछ प्रोवाइड करेगा। मतलब अब आपको
को अगर ये वर्क करना है तो स्क्रिप्ट सेंस का सब्सक्रिप्शन लेकर भी आप ये वर्क अपना घर पे कर सकते हैं, कि अगर आप देखना चाहते हैं, क्योंकि आपकी असाइनमेंट्स के अगर मार्क्स हैं, ग्रेड्स हैं, तो आप स्क्रिप्ट सेंस का इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। और अगर टाइप टू रिटन असाइनमेंट है, यानी कि प्रिंटेड फॉर्म में सॉफ्ट कॉपी है, तो भी आपको क्या करेगा, ग्रेडिंग्स एंड इवैल्यूएशन मिलेगा। कहने का सेंस है कि अगर हैंड रिटन है तब भी, प्लस प्रिंटेड है तब भी, आपको सिर्फ अपलोड करना है और आपके जो रिजल्ट्स हैं वो एआई की हेल्प से सबको सामने है। ठीक है, अब जैसे स्क्रिप्शंस क्या करता है, ऑटोमेटेड ग्रेडिंग आपको प्रोवाइड करेगा। तो एक तरीके से क्या करा उन्होंने, जैसे आपके हैंड रिटन असाइनमेंट्स हैं इसलिए करा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो कर सकते हैं, एग्जाम्स को भी जो इवैल्यूएट करना है, तो ये बहुत इजी वे है कि अगर हम सोचे कि एग्जाम्स में भी वैल्यूएशन करना है तो टेक्नोलॉजी के हेल्प से आपका एग्जामिनेशन में भी ये बहुत टीचर्स की हेल्प करता है, राइट। ठीक है, टाइम सेवर्स फॉर द एजुकेटर्स, क्योंकि स्क्रिप्ट सेंस में बहुत ज्यादा जो टाइम सेविंग करी, क्योंकि एआई की हेल्प से हमें कंटेंट तो मिल रहा है लेकिन करेक्शन वर्क भी इजीली हो रहा है, ग्रेडेड अपने आप मिल रहे, सब कुछ मिल रहा है। एंड इम्प्रूव द स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस, की किस तरीके से जो स्टूडेंट एंड लर्निंग का है, जैसे है कि जैसे अगर हम बोलें कि कुछ आपके पास क्या है, आपने अपना असाइनमेंट लेके सबमिट करा, ठीक है, आपके पास ग्रेडिंग्स आ गई, और उन ग्रेडिंग्स को कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, सो स्क्रिप्ट सेंस आपकी काफी हेल्प करेगा। एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन एजुकेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आपका जो कंटेंट है अगर हैंड रिटन है तो उसको क्या करेगा, डिजिटली कन्वर्ट करके आपको रिजल्ट्स काफी बेटर वे में आपको प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो स्क्रिप्ट सेंस कैसे हेल्प करता है एजुकेशन में, मेरा ठीक है। अब हमारे पास ये जो थे एआई लर्निंग प्लेटफॉर्म से, इसके बाद सेकंड कैटेगरी आती है एआई टूल्स फॉर रिसर्च एंड एकेडमिक राइटिंग। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि रिसर्च वर्क के लिए कैसे एआई टूल्स हेल्प करते हैं और एकेडमिकली राइटिंग वर्क आप कैसे कर सकते हैं। देखो, फर्स्ट वन इज ग्रामरली एंड क्विलबॉट, ठीक है, इसका नेम सुना होगा। सेकेंड वन इज टर्निटिन, बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है प्लेगरिज्म का, ये भी सुना होगा। एंड CSE-IT-AI, ये मैं आपको बताऊंगी कि साइट क्या है। सबसे पहले हम करेंगे ग्रामरली एंड क्विलबॉट। देखो, आपको एआई के हेल्प से मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि कंटेंट जनरेशन आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके टीचर्स के पास, आपके एग्जामिनर के पास अगर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि प्लेगरिज्म को कैच कर रहे हैं, तब आप क्या करेंगे, क्योंकि आजकल इतने सारे, क्योंकि एआई का जो यूज है, तो एआई का जो यूज कितने हद तक आपने किया है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि एफर्ट्स करना स्टूडेंट को छोड़ना नहीं है, टीचर्स को छोड़ना नहीं है, सबके लिए क्या है, एफर्ट्स करना काफी कंपलसरी है। ठीक है, रिक्वायरमेंट है ही आज के, लेकिन काफी सारा जो कंटेंट है आपने क्या करा, एआई से कॉपी पेस्ट कर दिया। अगर आप सोचे कि टीचिंग एंड लर्निंग इतना इजी है कि टीचर ने चेक कर दिया, लेकिन जो आप एआई से आपने अपना असाइनमेंट प्रिपेयर करा है, तो आपको क्या लगता है कि वो प्लेगरिज्म में कैश नहीं करेगा? वो एआई प्लेगरिज्म में पूरा 100% शोड है, कॉपीड है। तो क्विलबॉट क्या करता है, फर्स्ट चीज, क्योंकि क्विलबॉट के साथ ग्रामर है, तो आपने अपने कंटेंट में अगर ग्रामरली यूज करा है, तो कहीं पर जैसे सेंटेंसेस में काफी जगह पर आप जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं, तो ग्रामर करेगा, क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा, एंड टोन इन एकेडमिक राइटिंग। कई बार ऐसा होता है कि जो वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, आपस में मैच नहीं करते, उसको काफी हद तक इम्प्रूव करता है। एंड क्विलबॉट क्या करता है, उसकी पैराफ्रेसिंग करता है। पैराफ्रेसिंग इन द सेंस, जैसे सपोज अगर एक पैराग्राफ आपने अपने कंटेंट का लिखा और उसमें लिख दिया कि पैराफ्रेस करो, तो वो क्या करेगा, कंटेंट का मीनिंग एग्जैक्टली सेम रहेगा, लेकिन वर्ड्स की लैंग्वेज बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ठीक है, एंड समराइजिंग कर आपको पूरा प्रेजेंट करेगा। लेकिन क्विलबॉट से अगर आपने क्या करा, कुछ आपको लिमिटेड एक्सेस मिलता है इसका फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने कुछ अपने जो वर्ड्स की लिमिट है अपना कॉपी पेस्ट कर लिया और आपने क्या करा, उसमें पेस्ट करा। देखिए, आप अपने फोन्स में अभी टाइप करिए www.quillbot.com, ठीक है, टाइप करिए www.quillbot.com, ठीक है, आपके पास एक तरफ आ जाएगी कंटेंट और उसमें वर्ड्स की लिमिट है, आपने किया और आपने क्या करा, उसको पैराफ्रेज करा, आपके पास वही सेंटेंसेस, वही पैराग्राफ के ऊपर रिफ्रेम होकर आ जाएगा। और ये रिफ्रेम पैराग्राफ एआई में कैच भी नहीं करता, लेकिन लिमिटेशन इसकी यही है कि ये सिर्फ एक ट्रायल तक ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको काफी पेड करना पड़ेगा। जो ग्रामर है इम्प्रूव करनी है, पैराग्राफ रिफ्रेज करना है, ईच एंड एवरीथिंग आप क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से चेंज कर सकते हैं।
जैसे मैंने एग्जाम्पल जो है कोट करा है, पीएचडी स्कॉलर, यानी कि जो पीएचडी किसी सुपरवाइजर के अंडर करते हैं, हम उनको कहते हैं पीएचडी स्कॉलर्स, रिफाइन देयर थीसिस, यूज ग्रामरली एडवांस सजेशन एंड क्विलबोर्ड पैराफ्रेज टू अवॉइड द प्लेगरिज्म। ठीक है, लेकिन ये काफी हद तक, मतलब मैंने कहा ना फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ 3/3 ट्रायल तक फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके बाद पेड वर्जन का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। पर चैट जीपीटी का भी क्या फ्री ऑफ कॉस्ट तो है, लेकिन वो अगर प्लेगरिज्म में कैच होगा तो वो चीज कंटेंट आपका पूरा एआई से कैच करेगा, तो आप उसको भी ये है कि आपको पैराफ्रेजिंग तो कंपलसरी है, यानी कि आप ये कर सकते हैं चैट जीपीटी के थ्रू कंटेंट ड्रिवन करा, क्विलपोर्ट में आपने पैराफ्रेज कर दिया, तो आपका एआई से भी वो चीज रिमूव हो जाएगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज टर्निटिन। टर्निटिन का नेम तो शायद आप सबने सुना हो, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है फॉर डिटेक्टिंग प्लेगरिज्म। ठीक है, प्लैग अगर आपका कैच करा, जैसे अगर हमने आपका जो वर्क है, असाइनमेंट है, चलिए मैंने अपलोड करा, स्क्रिप्ट सेंस ने उसको दे दिया ग्राम, आपका दे दिया परसेंटेज की, ठीक है, कि इसमें 82% तक कॉन्टेक्ट करेक्ट है। ठीक है, अब क्या करेगा टीचर, प्लेगरिज्म में उसको कैच करेगा। प्लेगरिज्म चेक करने में क्या होता है कि पूरा वो वर्ड हाईलाइटेड देखा, जैसे देखा 100% एआई, तो जो कंटेंट अगर एआई का है 100%, आप सोचिए कि बुक से अगर हम राइटिंग कर लेंगे तो क्या टर्निटिन कैश नहीं करेगा? बुक यानी कि टर्निटिन का मैं आपको बता दूं डेटाबेस इतना ज्यादा ब्रॉड है कि अगर वो बुक है, जैसे मैं बोलूं कोई जर्नल है, पीयर रिव्यूड है, उसका आईएसएसएन नंबर होता है, उसके थ्रू भी वो चीज डेटाबेस में इसके इंक्लूडेड है, तो टर्निटिन आपको बताएगा कि आपने इस जर्नल से ये पैराग्राफ लिया है, कुछ कंटेंट अगर आपने बुक से लिया है तो बुक का रेफरेंस से वो हाईलाइटेड डिफरेंट कलर से देगा कि आपने ये बुक से एग्जैक्टली कॉपीड करा है, और एआई से है तो एआई का डिटेक्शन देगा। तो अगर आपके वर्क में कितनी ओरिजिनलिटी है, कौन बताता है? टर्निटिन बताता है। ठीक है, जैसे कोई जर्नल आर्टिकल्स अगर हम सबमिट करते हैं तो रिसर्चर कैसे हेल्प करता है? टू वेरीफाई दैट द कंटेंट इज प्लेगरिज्म फ्री, यानी कि प्लैग फ्री। बहुत ज्यादा एडवांस सॉफ्टवेयर है, हाई लेवल का सॉफ्टवेयर है, और इसका जो है डिटेक्शन, क्योंकि मतलब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल हमें पता है कि 100 जो स्टूडेंट्स का पॉपुलेशन है, 99.99% जो पॉपुलेशन है स्टूडेंट की, वो एआई का यूज कर रही है। सो आप उसको अपना वर्क को कितना कन्वर्ट करके ओरिजिनल वर्क में करें, तो प्लेगरिज्म, यानी कि एआई की हेल्प से कॉन्टेंट जनरेशन हो रहा है, लेकिन आपको उसको रीड्राफ्ट करना है, रीफ्रेम करना है, ताकि वो प्लेगरिज्म में कैश नहीं हो, तो उस चीज का भी क्या है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एंड cite.ai, ठीक है, एआई साइटेशंस क्या होता है, हेल्प करता है जैसे पेपर रेफरेंसेस के लिए। जैसे अगर आपने देखा होगा कोई रिसर्च आर्टिकल आपने पढ़ा है तो नीचे क्या होता है, साइटेड गिवन होता है, यानी कि कोई साइटेड क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ कि एक कोट्स या एक पैराग्राफ जो मैंने अपने रिसर्च रिपोर्ट में लिखा, ठीक है, और उसी टॉपिक पे आप अपने असाइनमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप क्या होगा, नीचे मेरा साइटेशन नेम का गिवन होगा, तो आप, क्योंकि टर्निटिन में क्या होता है कि कुछ परसेंटेज तक अलाउड है, जैसे आपके अकेडमिक में 10% अलाउ करा प्लेगरिज्म आ रहा है, लेकिन 10% से ज्यादा आ रहा है तो आपको चेंज करना पड़ता है अपना कंटेंट। लेकिन वो 10% में भी क्या होता है कि साइटेड होना चाहिए, यानी कि मेरा साइटेशन है, अगर आपने मेरा कोई वर्क लिया है या किसी ऑथर का वर्क लिया है, तो आपको क्या करना है, उसमें साइटेड करना है उनको कि हमने इस वाला जो पैराग्राफ है यहाँ से लिया। साइटेशन के लिए भी एमएस वर्ड में कमांड है, तो आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी एग्जांपल देखिए, स्कॉलर राइटिंग अ लिटरेचर रिव्यू यूजेस साइटेड एआई टू फाइंड द सपोर्ट एंड कॉन्ट्रडिक्टिंग द साइटेशन फॉर देयर आर्गुमेंट्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज अब ये है एआई पावर डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन, जैसे आईबीएम वॉटसन एंड गूगल एआई है, SPSS इन आर, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आर की भी गिवन है आपके पास, एंड टैब्यू एआई एंड पावर बीआई एंड एआई। ठीक है, अब IBM वॉटसन एंड गूगल एआई, ठीक है, ये कैसे हेल्प करता है डेटा एनालिसिस में? जैसे आपके पास क्या है, रिसर्च वर्क में डेटा तो आपके पास गिवन है, ठीक है, लेकिन उसको आप एनालाइज करके अपनी रिपोर्ट्स में कैसे लिखेंगे? प्रॉब्लम तो सबसे ज्यादा यही आती है। तो एक जो सॉफ्टवेयर है दैट इज IBM वॉटसन एंड गूगल एआई, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं आप, प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मशीन लर्निंग मॉडल्स इन एआई ड्रिवन सॉफ्टवेयर है, तो इसके थ्रू क्या कर सकते हैं आप, अपने जो है बहुत सारे सॉफ्टवेयर और स्टैटिस्टिकल टूल्स आते हैं, स्पेशली जैसे अगर हम बोले कि शेयर मार्केट को अगर आपको प्रिपेयर करना है,
आपके पास एआई के बहुत सारा आपने क्या करा, डेटास को अपलोड करा, राइट। अब आपको ये बताना है स्टॉक मार्केट का अभी तक का ट्रेंड 5 साल का ये है और नेक्स्ट 5 years का क्या करना है। तो इकोनोमेट्रिक्स के हेल्प से क्या कर सकते हैं आप, उसमें अरीमा मॉडलिंग यूज करेंगे। मॉडलिंग काफी डिफिकल्ट होती है, काफी टाइम टेकिंग होती है, डिफिकल्ट तो रहता है ही है। तो आप क्या कर सकते हैं, इन सॉफ्टवेयर की हेल्प से, IBM, वाटसन एंड गूगल एआई है, आपको उसके प्रेडिक्शन एंड रिजल्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन ड्रॉबैक इसका सबसे बड़ा क्या है, जैसे अगर आप खुद कैलकुलेट करते हैं, सो यू कैन नो ईच एंड एवरीथिंग, आपको पता है कि कैसे आपने मॉडलिंग्स में ये करा, लेकिन आपके पास जो एआई ने दिया उस रिजल्ट को टेस्ट करने के लिए भी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि जो रिजल्ट आपके सामने ये सॉफ्टवेयर प्रेजेंट कर रहा है, मैं कह रही हूँ ठीक है काफी हद तक 80% तक ठीक है, पर 20% जो एरर के चांसेस है या कुछ है, तो आपको उसके लिए भी आंसर्स देना है, ठीक है, अपनी रिपोर्ट में। तो बेटर मतलब आप क्या कर सकते हैं, उन सारे सॉफ्टवेयर को मैनुअली मॉडलिंग, जैसे मैंने बताई अरीमा मॉडल है, गार्च है, आर्च है, सब कुछ आप अपना यूज करें, लेकिन जब आप उसका रिजल्ट इंटरप्रिटेशन करके आप अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें, आप उसके बाद क्या है, आपके रिपोर्ट में कहीं एरर तो नहीं है, तो आप इन सॉफ्टवेयर के यूज से आप हेल्प से कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको अब एनालिसिस वर्क कुछ नहीं करना, आप इन सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप एनालिसिस वर्क आएगा, आप अपना कॉपी पेस्ट कर दीजिए। नो, आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर जो आपके हैं आपको पर्सनलाइज यूज करना है, और IBA और इसके थ्रू आप अपने रिजल्ट्स को चेक कर सकते हैं। एक और सॉफ्टवेयर है बहुत पॉपुलर, को पायलट का नेम आपने सुना होगा। आप अपना जो डेटा शीट है, जैसे आप समराइज करा डेटा को टैबुलर फॉर्म में, आपने उसको अपलोड करा, राइट। जब आपने उसको अपलोड कर दिया डेटा फॉर्म में और आपके पास रिजल्ट आ गए, आपने उसको कमांड दी है, आपके पास पूरे गिवन रिजल्ट होंगे, आपकी पी वैल्यू का भी आंसर होगा, हाइपोथेसिस एक्सेप्ट है रिजेक्ट है, सब कुछ होगा, लेकिन आपको मैनुअली वर्क करना है, उसके बाद आपको चेक करना है। ये सॉफ्टवेयर बेसिकली ये हेल्प करेगा है कि आपने जो अपना हाइपोथेसिस फ्रेम करी, चेकिंग करी, कहीं आप अगर एरर प्लेस कर रहे हो, तो इन सॉफ्टवेयर की हेल्प से आपकी नॉलेज में आ जाए। डजंट मीन कि आप उसका रिवर्स फॉर्म में यूज करो कि जो एआई दे रहा है वही रिजल्ट को आपने कॉपी पेस्ट करा और आपने प्रेजेंट करा, नो, राइट। नेक्स्ट इज SPSS, SAS इन आर सॉफ्टवेयर। SPSS जो है मोस्ट कॉमनली सॉफ्टवेयर है, दैट इज स्टैटिस्टिकल पैकेजेस फॉर सोशल साइंसेस रिसर्च, जिसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, R है, AI प्लगइन्स है। तो ये स्टैटिस्टिकल जो टूल्स है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा की प्रोसेसिंग कर सकते हैं, प्रेडिक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं, एंड पैटर्न का भी रिकॉग्नाइजेशन कर सकते हैं। अब देखिए SPSS के रिजल्ट है, आपको पता होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, व्हाट इज योर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। उसके बाद आपने अपलोड करा और आपके पास जो रिजल्ट्स हैं वो आपके स्क्रीन पर प्रेजेंट होंगे। नाउ अनदर वन इज टैब्यू AI इन पावर BI। ये जो AI सॉफ्टवेयर है वो क्या होता है, डेटा विजुअलाइजेशन टूल में है, ठीक है। जैसे कि अगर इसके जो डैशबोर्ड में जो डेटाज है, तो उसकी क्या है, वो प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर सकता है। जैसे मैं बात करूं, जैसे आपके पास क्या है, इन्फ्लेशन है, सपोज इन्फ्लेशन रेट है, और आगे ये इन्फ्लेशन का मेजरली कैसे इफेक्ट पड़ेगा, तो टैब्यू AI के थ्रू आप बता सकते हैं कि अभी तक जो इन्फ्लेशन का रेट था, करंट सिनेरियो में, जैसे अगर हम बोलें कि आजकल बहुत सारी कंट्रीज में वॉर्स का भी चल रहा है, तो रिजल्ट्स आएंगे, तो ये बेटर रिजल्ट आपको टैब्यू AI एंड पावर BI के थ्रू प्रेजेंटेबल है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास कुछ लिटरेचर रिव्यू एंड नॉलेज डिस्कवरी बेस्ड सॉफ्टवेयर। देखिए लिटरेचर रिव्यू में बेसिकली क्या होता है कि आपका जो एरिया है, इससे पहले कहाँ कहाँ रिसर्च हुई है और कितनी कितनी रिसर्च हुई है, ठीक है। और यानी कि आप जैसे सपोज अपना रिसर्च कर रहे हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन पे तो आज से पहले काफी स्टडीज हो चुकी हैं, तो आपकी स्टडी डिफरेंट क्या है, तो आप क्या कर सकते हैं, लिटरेचर रिव्यू में थोड़ा सा नॉलेज डिस्कवरी करेंगे और उन सारे जो टूल्स को फाइंड आउट करेंगे जो अभी तक जिन पे सर्च नहीं हुआ है। जैसे इसमें से जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर है AI के, दैट इज रिसर्च रैबिट एंड कनेक्टेड पेपर्स। रिसर्च रैबिट देखो, इसका जो आप लोगो देखें उसमें एक रैबिट के शेप में बन रहा है, ठीक है। देन है एलिक्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड सिमेंटिक स्कॉलर्स, ठीक है। सबसे पहले रिसर्च रैबिट क्या होता है, ठीक है। रिसर्च रैबिट में क्या होता है कि डिस्कवर करता है रेलेवेंट लिटरेचर ऑफ AI। जैसे आपकी स्टडी मैं बोलूं ऑनलाइन रिपोर्टिंग पर है, तो आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग से ही रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं आपके सारे वो होंगे, प्रेजेंट कर देंगे कि, और जो रिसेंट स्टडीज चाहिए तो AI के हेल्प से आपको रिसेंट स्टडीज में मिल जाएंगी। नेशनल और इंटरनेशनल स्टडी में बाइफ्रिगेशन चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। तो लिटरेचर रिव्यू क्या हो गया कि जो एरिया पर आप अपना रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं, उन एरियाज पर आपको जो अभी
अभी तक कितनी रिसर्च हुई है, वो डिटेल कंटेंट आपको पूरा एआई के हेल्प से प्रेजेंट हो जाएगा. फॉर एग्जांपल जैसे a scholar researching blockchain technology. तो blockchain technology ऐसा कोई नहीं है कि इतना emerging और hot cake है, ठीक है. blockchain technology क्या है, बहुत नॉर्मल है, ठीक है, और उस पर काफी सारी रिसर्च हो चुकी है. so research rapid to find the papers cited by the leading blockchain researcher, right. अब देखिए elect organization क्या करेगा, the uses of AI to automate literatures and review by summarizing the key insight for multiple papers. जैसे मैं बोलूं कि आपके पास लिटरेचर रिव्यू आ गए और लिटरेचर रिव्यू आप पढ़ रहे, तो रिसर्च रैपिड करता है खाली पेपर्स को, आपके पास एक डेटाबेस है वो सारे प्रेजेंट कर देगा, लेकिन उन सारे मल्टीपल पेपर्स में क्या क्या की पॉइंट्स है, क्या क्या हाईलाइट है, कौन सा रिसर्च उन्होंने यूज करा टूल, ठीक है, रिसर्च टूल के बाद उनकी फाइंडिंग्स क्या है. तो एलाइटर क्या करेगा, आपको इन सब में हेल्प करता है कि एक तरीके से जो क्रिटिकली जो मैं बोलूँ ना इन डेप्थ चीज है पढ़ने के लिए, तो आप इस सॉफ्टवेयर का यूज से कर सकते हैं. जैसे एक मेडिकल रिसर्च है, अगर उसको क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए करना है, तो क्या करेगा, जैसे न्यू ड्रग है, बाय यूजिंग ये कि अगर हम इस ड्रग का यूज करते हैं तो क्या रिजल्ट्स रहेंगे, तो आपको क्या है इन डेप्थ, अगर मैं बोलूँ कि ट्रायल एंड एरर वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो यूज कर सकते हैं. तो ये बेसिकली साइंटिफिक रिसर्च के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है. एंड द लास्ट वन इज सिमेंटिक स्कॉलर. सिमेंटिक स्कॉलर क्या करता है कि एक तरीके का ये सर्च इंजन है, ठीक है, वो क्या करेगा, दैट इज अवेयर अबाउट द रिकमेंडेशन एंड साइटेशन एनालिसिस. तो इस चीज में भी काफी हेल्प प्रोवाइड करता है. जैसे अगर कोई रिसर्चर है, ही इज राइटिंग ऑन द क्लाइमेट चेंज पॉलिसी, तो आपके पास जो हाईली रेलेवेंट सोर्स होते हैं वो सिमेंटिक स्कॉलर प्रोवाइड करते हैं. यानी कि अगर कोई लीगल फ्रेमवर्क चाहिए कोई अथॉरिटी के सब कुछ, तो वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है. तो ये भी आपके पास के सेकेंडरी डेटाबेस का जो भी आपको मटेरियल चाहिए आपको अपनी रिसर्च वर्क के लिए, तो ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज AI इन एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन. जो मैंने बताया था कि आजकल जो बहुत पॉपुलर है दैट इज गूगल क्लासरूम AI एंड माइक्रोसॉफ्ट टीम, पैक एंड कॉग्नी, ठीक है. अब देखिए गूगल क्लासरूम में क्या होता है, जैसे अगर गूगल मीट है तो ऐसे ही गूगल क्लासरूम भी क्रिएट होता है. तो हर क्लासरूम के जो स्टूडेंट्स है वो लिंक के थ्रू उसमें एड ऑन हो जाएंगे. अब टीचर क्या करेगा, कोई लेक्चर डिलीवर कर रहा है, उस क्लासरूम में जितने प्रेजेंट है अटेंडेंस ऑटोमेटेड हो जाएगी AI की हेल्प से, ठीक है. आपके जो टीचर ने सपोज कोई आपको असाइनमेंट दिया तो आपके मल्टीपल असाइनमेंट सबमिट हो जाएंगे वहां पर और चेक भी होता है, ठीक है. एंड माइक्रोसॉफ्ट टीम सॉफ्टवेयर तो आजकल काफी है कि जो अगर हम कोई ग्रुपिज्म में कोई एक्टिविटी करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट टीम AI सॉफ्टवेयर के थ्रू पॉसिबल है. फॉर एग्जाम्पल अ प्रोफेसर यूजेस गूगल क्लासरूम टू ऑटोग्रेड द मल्टीपल चॉइस क्विज. ये मैंने बताया था अभी आपको क्विज में अपेयर होना है, इंस्टेंट फीडबैक आपको मिलेगा. जैसे आपने अपना क्विज सबमिट करा, 50 क्वेश्चन है, 50 में से हर एक स्टूडेंट का क्या स्कोर रहा, तो गूगल क्लासरूम के थ्रू आपको पता चल सकता है. एंड नेक्स्ट वन इज पेबैक. पेबैक क्या होता है कि एक डिस्कशन प्लेटफॉर्म है. जैसे क्या होता है कि एक जो है स्टूडेंट्स के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो करता है. जैसे मैं बोलूँ कि अगर आप जो है जो साइंस के स्टूडेंट हैं और बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है आपको उसमें डिटेल डिस्कशन करना है, तो आप पैक के थ्रू उसमें डिटेल डिस्कशन से वो आप कर सकते हैं, ताकि जो स्टूडेंट है काफी ज्यादा जगह में एंगेज रहे. और ये क्या है, जैसे बिजनेस एथिक्स पर डिस्कस करना है तो यानी कि ग्रुपिज्म एक्टिविटी है पैक. एंड द लास्ट वन इज कॉग्नी. कॉग्नी क्या करता है कि एक तरीके का वर्चुअल ट्यूटर है जो हेल्प करता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड पर्सनलाइज्ड फीडबैक. जैसे काफी जगह पे तो क्या होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कॉग्नी क्या करता है, आपको ओपन एंडेड क्वेश्चंस प्रोवाइड करता है, ठीक है. जैसे आज स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विद द एसे राइटिंग, तो अब आपको क्या करना है कि इसके थ्रू आप अपना जो है AI पे जो है आप वो एक ऐसे लिखिए, जो भी आपको ऐसे का टॉपिक देते हैं, फिर आपको ये बताएगा ओपन एंडेड के थ्रू कि आपने कहाँ का एरर किया, कहाँ क्या है, क्या मीनिंग ड्राइव हो रहा है, ठीक है. ट्यूटोरिंग द स्ट्रक्चर एंड आर्ग्यूमेंट डेवलपमेंट, तो यानी कि सब कुछ जो है इसके हेल्प के थ्रू प्रोवाइड हो सकता है. थैंक यू. तो
मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा कि एआई कैसे हेल्प करता है आपकी एजुकेशन में। मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स हैं जो मैंने बताए हैं, और इससे ज्यादा सॉफ्टवेयर्स भी आप जो है इसका यूज कर सकते हैं। बट ये है कि इन सॉफ्टवेयर का क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। कुछ तो हमारे पास क्या होता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ हमारे पास क्या है पेड वर्जन में अवेलेबल है। सो इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चंस? Yes, thank you, ma'am, for the session. If anybody is having question, then please ask. The session is open for 5 minutes. Hello, Yes. ma'am. Yes. My question is, will AI-powered tutors replace human educators in future? देखिए, अगर मैं बोलूँ कि एआई जो पावर ट्यूटर्स हैं वो एजुकेशन जो एजुकेटर्स को रिमूव कर सकते हैं या नहीं, राइट? तो मेरा आंसर ये होगा कि देखिए जो ट्यूटर्स हैं, इट इज जो बेसिकली क्या है कि आजकल मैं बोलूँ कि जो वर्ल्ड है उसमें क्या है चेंजेस बहुत जल्दी हैं। ट्यूटर्स में क्या होता है बेसिकली, अगर कोई ट्यूटोरियल है एक टीचर्स का रिकॉर्डेड लैंग्वेज है तो एक लिमिटेड टाइम तक उसका यूजफुल है। लेकिन अगर आप बोलो कि टीचर्स को रिप्लेस करके ये ट्यूटर्स ही हेल्प करेंगे, सो मेरा आंसर है नो। क्योंकि जिस तरीके से क्या है बेसिकली, अगर जो करंटली रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, नॉलेज चेंज हो रही है, आप देखेंगे सब्जेक्टिव कंटेंट भी चेंज हो रहा है, तो उस अकॉर्डिंगली मैं बोलूंगी कि ट्यूटर्स तो रिमूव नहीं होंगे। बस ये है कि अगर जो एक कोर्स है, अगर कोई मल्टीपल ग्रुप्स बने हुए हैं और नॉलेज उसकी शेयरिंग करना है, ट्यूटोरियल सिर्फ उसमें हेल्प करता है कि एक रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप एक लिमिटेड टाइम तक यूज कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर द चेंजेस वो सारी चीजें के लिए आपको एक टीचर्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं बोलूँ कि अगर मैंने कॉन्सेप्ट को 5 बच्चों में एक्सप्लेन करा, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग है, बाकी 4 बच्चों की अलग है, तो अब क्या है आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आपके वे में आपको आंसरिंग करूंगी। बाकी जो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं उनकी क्वेरी है, पर वो जो मशीन है वो मशीनरी का वर्क करेगी, एक सेट जो कमांड्स हैं उसके थ्रू चलेगी। पर टीचर का रिप्लेसमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है। फ्यूचर में ये है कि कुछ जो कोर्सेज के लिए कुछ आपको गाइडलाइंस मिल सकती है, पर फाइनली उस चीज को भी सपोर्ट करने के लिए, बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए, बेटर रिसर्च के लिए टीचर इज मस्ट। Thank you, ma'am. Any more questions? Yes, ma'am. Ma'am, what strategies can faculty balance the use of AI tools with traditional teaching? Ma'am, you can use in ChatGPT. You can use Quillbot for paraphrasing. तो because research is must for your area. Like अगर आप अपने किसी स्कॉलर्स को अगर आप करा से, ठीक है। एंड साइटेड एआई जो मैंने आपको बताया था कि उसमें आप क्या कर सकते हैं कि स्क्रिप्ट सेंस में भी आप क्या करेंगे कि अपना जो बच्चों के असाइनमेंट्स हैं आप उसको अपलोड कर सकते हैं, एंड उसके जो ग्रेडिंग्स हैं आपको वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा। सो आपका एक टीचर का रोल क्या हो गया कि आपको एक तरीके से स्टूडेंट से असाइनमेंट कलेक्ट करने हैं, चाहे वो हैंड रिटन असाइनमेंट है, चाहे आपके वो जो है सॉफ्ट कॉपी असाइनमेंट है। तो स्क्रिप्ट सेंस पर आपको डाउनलोडेड करना है, स्कैन करना है असाइनमेंट और आपको सबमिट करना है। तो ग्रेडिंग एंड ऑल सब कुछ आपको वो स्क्रिप्ट सेंस प्रोवाइड करेगा। तो और चैट जीपीटी आपके मटेरियल्स के लिए है ही है। ये जितने भी मैंने आज एआई सॉफ्टवेयर यूज करे, तो आप इसको टीचिंग एंड लर्निंग में बिल्कुल यूज कर सकते हैं। जैसे अगर रिसर्च में अगर आपको साइट करना है तो साइटेड एआई का भी यूज कर सकते हैं। पैराफ्रेजिंग करना है तो क्विलबॉट और ग्रामरली का यूज कर सकते हैं। गूगल क्लासरूम आपकी ऑनलाइन टीचिंग के लिए बहुत मस्ट है। सो यू कैन यूज एवरीथिंग। मल्टीपल सॉफ्टवेयर मतलब आप यूज कर सकते हैं उसके लिए। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Any more questions? Okay, so thank you, ma'am, for the valuable guidance and your prestigious time. We have really benefited very much from the session. We came to know about various AI tools such as Coursera AI, EDX AI, ScriptSense, others. It will be really useful in the content creation, research work, and other work for the teachers as well as students.
You rightly said that technology and AI should be used in effective way, or there can be disadvantage of using it, right? It will be really benefit for the students as well as faculty if we use it in positively and ethical way. Thank you so much, ma'am, for your session. Thank you. Okay, so hereby I declare the one-day seminar about the AI in educator to be completed. I thank you all the participants for the patient listening from the morning and also joining each and every session. Kindly fill the feedback links given to you in every session. Thank you so much for the wonderful cooperation.